ओके। हेलो हेलो हेलो। चलो ठीक है। Let's sorry. I hope everything will work well. I hope. I just pray to God. Okay. I hope everything is good. I hope everything is good. Everything will work well. I hope. Okay. I hope everything is good. Just pray to God everything is good. चलो सही है. Okay. I hope just pray to God everything. Mm. Okay. Hello, 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 hello. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. I hope everything should be good. Okay, let me check it. Let me check that out. Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome to live stream. Hi everyone. Welcome to live stream. Hi everyone. Welcome to live stream. Hello, 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 hello. Hi everyone. Welcome to live stream. Hi everyone. Welcome to live stream. Hello, hello, hello. I hope I am audible. I hope I am audible. I hope everything goes well right now. आई होप सब कुछ सही रहे फिलहाल के लिए तो. हेलो हेलो हेलो. हम्म. हेलो 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 हेलो. हेलो हेलो.
It's like select everything from this. Let's see. असाइनमेंट 10 डेटा क्लीनिंग. ठीक है. ये हाय यश, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. भैया मेल करा था मैंने आपको रिसेंटली. जस्ट लेट मी चेक वंस भाई. अच्छा. नो नॉट येट भाई, नॉट येट आया नहीं है फिलहाल के लिए. लेट मी जस्ट चेक वंस. ओके वी हैव वन क्वेरी. हाँ अभी अभी आया है मेल. राइट 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 राइट. अभी रिफ्रेश किया है. रिसीव्ड वन. कैमरा कौन सा? कैमरा नॉर्मल भाई. नॉर्मल अपना यही. क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? लैपटॉप का कैमरा प्लस एक एक्शन कैमरा है. ठीक है. तो दो कैमरा कनेक्ट करके टू डू लाइव स्ट्रीम. दैट्स इट. दैट्स द थिंग. लैपटॉप का कैमरा और एक्शन कैमरा, जस्ट कनेक्ट इट थ्रू वायर एंड डू इट. दैट्स इट. उसमें कुछ ये नहीं है यार. यू कैन डू इट. या तो आप मोबाइल से करो या तो इसमें करो, जिसमें आपको सही लगे. बहुत सारे ऑप्शन है. आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा. आपको यूट्यूब में ही इजीली यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस कि कैसे लाइव स्ट्रीम करना है मोबाइल से, एक्शन कैमरा से. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस है भाई. मतलब आप खोजोगे आपको, मतलब हर जगह हर एक एक वीडियो में आपको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि समथिंग इज सीक्रेट हियर. नॉर्मल एक्शन कैमरा है या तो कभी कभार ये वाला कैमरा जो अपना लैपटॉप का कैमरा. दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू कनेक्ट इट एंड यूज इट. दैट्स इट. दैट्स द थिंग. बहुत सिंपल है. और मेरे को भी आता नहीं था पहले. मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हूँ कि कैसे क्या करना है क्या नहीं. सो देर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट. मतलब आई मीन टू से बहुत इजी है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट इज़ वेरी इजी. राइट. तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. बहुत इजी है. और एनी वन कैन डू. आप लाइव स्ट्रीम के लिए पूछो उससे क्या नाम है, यूट्यूब से ही पूछो. आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. राइट. बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपको कोई सीक्रेट, कुछ सीक्रेट विक्रेट नहीं है भाई. नॉर्मल एक्शन कैमरा है या तो अपना ये वाला कैमरा है, लैपटॉप कैमरा. दोनों में से जो भी सही लगे यूज़ करो. एक्शन कैमरा का प्रॉब्लम ये है कि बैटरी डाउन हो जाता है कुछ टाइम के लिए. बिकॉज थिंग इज मैकबुक में सारे पोर्ट्स एक्चुअली सेम काम नहीं करते. दैट्स इट. दैट्स द थिंग. वो एक है डिसएडवांटेज. बाकी कल जैसे आप देखना मेरा ये कैमरा का बैटरी डाउन हो गया था तो बंद हो गया था एक कैमरा. तो मैं शायद इसमें ऑन किया था, पता नहीं बीच में कल लाइव स्ट्रीम भी बंद हो गया था. तो मैंने इसमें ऑन किया था अपना मोबाइल, सॉरी लैपटॉप में. तो इट इज़ लाइक दैट. ए हाय प्रियांश, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. हाय प्रियांश, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? तो किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछो लाइव स्ट्रीम में. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड. सही है. नाना भैया सीक्रेट
तो नहीं है पता है मुझे, पर मुझे लगा कि कुछ वायर्स कनेक्ट कर, हाँ वायर से ही कनेक्ट हो रहा है भाई, वायर से ही कनेक्ट हो रहा है। इट इज़ लाइक दैट, मतलब दो दो तरीका है। या तो देखो दो दो तरीका है, अगर आप चाहो तो यू कैन कनेक्ट थ्रू वायर, थ्रू ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र से भी कर सकते हो। वेब ब्राउज़र से आप लिंक पेस्ट करो, आपका कैमरा वाला काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो वायर से कौन सा रहेगा, अरे ये क्या हो गया भाई। तो वायर से कौन सा रहेगा, जो जैसे आपका एक्शन कैमरा हो गया, ठीक है। फिर अगर आपको DSLR कनेक्ट करना है, काइंड ऑफ, अगर आपको मोबाइल कनेक्ट करना है तो वायर से, ठीक है। इस तरीके से जितना मुझे नॉलेज है। सेकंड, आपका वेब ब्राउज़र से भी कर सकते हो, वेब ब्राउज़र से वाया लिंक डायरेक्टली, बट वही है कि इंटरनेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वरना फिर थोड़ा इशू रहता है, राइट। दैट्स द थिंग। और हाँ यही दो ही है, दैट्स इट, राइट। सो दैट्स द थिंग, कोई वो नहीं है वायर वगैरह अभी, जैसे वायर कनेक्ट किए हो बिकॉज चार्जिंग साइड बाय साइड रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, यू कैन डू इट, राइट। ये हाय जयदीप, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू STREM लाइव स्ट्रीम। आई हैव गॉट योर मैसेज डिलीटेड, बट एनीवेज कोई बात नहीं, you can message me again, no worries for that, right. You can message me again, no worries. एक मिनट यार, ये सब तो ठीक ही है ना, just a minute. मैसेज कर सकते हो आप, नो वरीज फॉर इट। जस्ट वन, जस्ट अ मिनट, एक मैसेज आया है फ्रॉम माय क्लाइंट। आप लोग डाउट पूछो, ऐसा नहीं है, मतलब मैसेज आया है, मैं आप लोग का ही मैसेज देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, we have one query from Jaideep. Bro, can you tell me how to connect SQL Python? I have trouble in that. Okay. तो SQL plus Python you want to connect, मतलब you want to connect the SQL database का everything, like every data and all, to Python and work. Okay, okay. Whatever I know for PostGRE SQL, for PostGRE SQL, whatever I know that you have to install a driver in this, मतलब plus you have to take care of a library. पाइथन में एक लाइब्रेरी है, ये ऐसे कुछ PSYCOPG2, दिस इज फॉर पोस्ट GRE SQL, ठीक है, फॉर दिस RDBMS I mean to say. So also you need to install maybe a driver और this library जो है, इस टाइप से PIP इंस्टॉल करके, मतलब आप कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक। इट इज़ लाइक समथिंग PSYCOPG2 बाइनरी, आप चाहो तो ऐसे, हाँ मतलब इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना ही है ड्राइवर, ठीक है। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम ऑफ द डेटास, जैसे कि लोकल होस्ट का जो नंबर है वो सब, लोकल होस्ट का नंबर, फिर पोर्ट नंबर,
You have to take care of that. ठीक है, port number and all. हाँ, database name, password. Password, if you have a password then it's okay, if not कुछ ही नहीं. हाँ, यूजर नेम भी चाहिए, all those things, यूजर नेम एंड ऑल. ठीक है, मतलब द थिंग इज इफ यू वांट टू कनेक्ट लोकली, ठीक है, if you want to connect locally, the thing is what we are working on from client, or I would say from corporate also. From corporate point of view, everything is connected from their own database. ठीक है, you don't need to do anything, it is automatically updated. And all the मतलब database admin होते हैं ना, they make sure they do all those work. Database admin do all those work from the backend, so no need to worry about that. So these are the things you need to take care of. That's it. मतलब Python में in this way you can connect if you want to connect in a local machine. Local machine मतलब कि आपका लैपटॉप, सिंपल. ठीक है, आपका लैपटॉप एंड ऑल. Okay, we have one more query. Please make a video on that. Okay, let's see. Let's see. Actually, there are a lot of videos in YouTube for that, but still, let's see. Let's make a video on this. Right. Hey, hi Jay. Welcome to live stream. Welcome to live stream. Okay, we have one more query for MySQL. Okay, for MySQL, I have to check by. For MySQL, I have to check. For PG मतलब PG admin, post GRE SQL. I know. For MySQL, I have to check once. Right. That's the thing. Correct. But no worries. Let me check and get back to you for this. Okay. So let's start with question. By the way, let's do some question for data cleaning kind of thing. I think we are left with this phone number cleaning. Okay. So phone number cleaning question is there. Question for phone number cleaning. Okay. Let's do that. Let me check. I hope everything is okay and good to go. ठीक है. Yes. So in phone, acha, let's see what we have in this phone number ka column. Let's check that out. Okay. Phone raw is the thing, and let's copy and let's paste it here. So okay, from here, what defect can you check? Simple, like simple defect. Like what defects do we have here? We have a space. We have a space here. Here we don't have this plus 91 kind of thing. Here what we have dash and all. Okay. Here we have 0 instead of 91. I mean to say somewhere there is 0, somewhere there is 91. Okay, it is like that. So here space is there. Matlab 91 is there, everything is there, space is there, but plus is. So this kind of issues you can see mostly. Mostly. Okay, we have one more query from J. I have a doubt. Yeah, sure. Ask me, bhai. Ask me. No worries for that. You ask your doubts. You ask your doubts. No worries for it. You ask your doubts. I will help you out in this. Let me check. I hope everything is going good. I hope everything is going good. Let me check. You ask your doubts. No worries, Jay. Please ask your doubts. I'm happy to help you out. Let's start from here.
ठीक है। Ask your doubts. Me check. I hope everything is good to go. Everything is correct. Ask your doubts. Okay, we have a query from J. Can you explain recursive city? Acha, recursive city is right. Recursive city. ठीक है, recursive city क्या रहता है? It is like kind of calling itself to find the next level of data, and it will go on like this until and unless no more rows are found. I mean to say, suppose example grandfather, मतलब छोटा एग्जांपल देता हूँ, grandfather father child. ठीक है, it is like क्या हो गया, like grandfather father child, it is like that. If we have three members in this and we don't have data for grandfather, example we don't have data for grandfather, it will be like null. ठीक है, then comes father. ठीक है, we give this as a first, suppose we give like family uh, tree ranking. ठीक है, this is not dense rank or something, don't confuse in this. Let's give family tree ranking kind of thing, so it's null, then father, then child. ठीक है, or let's take like this, grandfather comes first, so let's not give a ranking for that, let's write it proper, then comes father first, then come child. ठीक है, so what will you tell SQL कि first find the top authority in the family tree. ठीक है, first find the top authority in family tree, then go, then take this as a starting point. ठीक है, take this as a starting point, and from this starting point go downsizing the family tree, like from grandfather comes father. ठीक है, right, then from father comes the child. ठीक है, so this is like that, it is like that. Or if you want you can check that out, like in companies like CEO, then general manager, then manager, then employee, it comes like that, CEO, general manager, manager, employees. So it is like that, you will be telling SQL ki you will be telling SQL
कि find the next level of the data, whatever data you are having, find the next level of data until there is no more rows are found. ठीक है, until no more rows are found, that's the thing. ठीक, this is how recursive CT work, simple as that. And all these things will be in a CT. And why recursive? Recursive मतलब it will work automatically, it will work automatically until and unless it does not reach to the base point or the end point. Like it will have a starting point and it will have a base point or end point. ठीक है, this is what recursive CTE means. ठीक, hey hi others, welcome to live stream. एक मिनट. Hi others, welcome to live stream. Okay, we have one query and let me just keep it here. It is like क्या query है? Like brother मैं ये पूछ रहा था कल इंटर्नशिप, हाँ आप बोल रहे थे कल इंटरव्यूज वगैरह है एंड ऑल. मतलब पहले लाइव स्ट्रीम में आप पूछ रहे थे, करेक्ट. तो कल आपका इंटरव्यू है फॉर द इंटर्नशिप. ओके, क्या क्या रेडी करूँ? एक और शॉर्टलिस्ट हुआ है, रेज्यूमे HR. ओके ओके, नाइस नाइस, गुड थिंग. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हो डोंट गेट पैनिक, क्योंकि यही मेन चीज़ है. अगर पैनिक हो गया तो जितने भी आपने नॉलेज गेन किया होगा वो तो चले जाएगा, लेट मी टेल यू. ठीक है, पैनिक नहीं होना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. अगर नहीं होता है इस कंपनी में, बहुत कंपनीज और हैं, और हालांकि आपने बोला है नेक्स्ट कंपनी का भी कॉल आया है HR से, सो जस्ट चिल. ठीक है, पैनिक मत मत होना, दैट्स इट. सेकेंड थिंग, जितना आपने नॉलेज गेन किया हुआ है अभी तक कोई भी टूल्स में, या तो SQL ले लो, या तो पाइथन ले लो, या तो BI टूल्स ले लो, कोई भी टूल्स ले लो, आपने जितना भी नॉलेज गेन किया है उसी को एक बार आप रिवाइज करो, रिवाइज करो और जाओ. ठीक है, एडिशनल कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एडिशनल कुछ टॉपिक्स मत पढ़ो. ठीक है, अगर एडिशनल टॉपिक कुछ आता है, लीव दैट, नो वरीज फॉर इट, लीव दैट, कोई दिक्कत नहीं है. जितना आता है उसी को रिवाइज करो, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, उसी को रिवाइज करो एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, वो मेन चीज़ है. जितना आता है यू शुड बी हैविंग 100% कॉन्फिडेंस कि इसमें से कहीं से भी कुछ पूछे, A to Z कहीं से भी कुछ भी पूछे, आप इजीली आंसर दे पाओगे विदाउट एनी इशू. ठीक, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग, राइट. वो आप ध्यान देना, करेक्ट, वो आप ध्यान देना. और बाकी एडिशनल चीज़ कुछ पढ़ना मत. अभी एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट को एक बार आप देख लो, एक बार आप देख लो कि क्या क्या है, एक बार आप वो सब देख लो कि क्या क्या है प्रोजेक्ट में, आपने क्या क्या किया, दैट्स इट. क्योंकि एज अ फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने बोला कि ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट से ही पूछेगा, ज़्यादातर प्रोजेक्ट से ही पूछेगा. मतलब क्या है, सिंपल, जो थियोरिटिकल है, थियोरिटिकल नॉलेज बेसिक्स वाला वो सब पूछेगा, जैसे कि वेयर वर्सेस हैविंग, कहाँ क्या यूज़ होता है एंड ऑल. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कुछ विंडोज़ फंक्शन से पूछ सकता है. ठीक है, कुछ कुछ अगर उतना हाई लेवल का रहता है तो ठीक है, बट मेनली ये ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह पूछेगा. अगर ट्रिकी क्वेश्चन अच्छा आप दे दे तो आंसर, और वो बेसिक्स रहता है, ट्रिकी क्वेश्चन में कोई हाई लेवल नहीं पूछता है, वेरी बेसिक्स, जो बेसिक्स नॉलेज आप लोग का वही पूछेगा. ठीक है, बहुत बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स, सो नो नीड टू वरी अबाउट. ठीक है, उसके बाद अगर आप अच्छा आंसर दे देते हो तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेके प्रोजेक्ट में जाएगा. ठीक, तो प्रोजेक्ट में आपने जो जो किया वो आपको वहाँ से टेक केयर ऑफ द इंटरव्यू. ठीक है, वहाँ से आप टेक केयर करोगे इंटरव्यू का, क्योंकि वो वही है मेन टर्निंग पॉइंट. तो आप जो भी बोलोगे मैंने प्रोजेक्ट में ये किया हुआ है, दिस दिस दिस, उसी से ही नेक्स्ट राउंड जो होता है, मतलब सेम इंटरव्यू का ही जो नेक्स्ट पार्ट होता है
वहीं से ही क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, वहीं से ही क्वेश्चंस पूछेगा, सिंपल एज दैट। तो मेक श्योर करो जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, आई होप आप बेसिक्स प्रॉपरली प्रिपेयर किए होगे अभी के डेट में। आई होप आई थिंक सो, ठीक है। तो बेसिक्स प्रिपेयर है, तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। जो प्रोजेक्ट्स आपने किया हुआ है, जो सीवी आपने दिया था, जो सीवी आपका सिलेक्ट हुआ है फॉर द प्रोजेक्ट, वॉट एवर द प्रोजेक्ट आपने दिया, वो प्रोजेक्ट को एक बार आप टेक केयर करो, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, राइट, यू आर गुड टू गो, दैट्स द थिंग, नो वरीज फॉर दैट, ठीक है। और पैनिक मत होना, वरना पैनिक होने से जो आप पढ़े हो वो भी, इट विल बी लाइक ब्लाइंड फोल्ड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लाइंड फोल्ड मतलब कि जो आप पढ़े हो वो भी एक तरीके से क्लियर विजन नहीं दिखने वाला है आपको। बस पैनिक मत होना, ये मेन चीज़ है। पैनिक होने से बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे खुद के खराब हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज खराब हुए हैं, इवन दो नॉट इवन कॉर्पोरेट, मतलब क्लाइंट इंटरव्यूज भी खराब हुए हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कोविड टाइम में क्या था, उस टाइम तो जॉब नहीं था फॉर 7 मंथ्स स्ट्रेट। तो उस टाइम बहुत पैनिक हो रहा था कि होगा नहीं होगा एंड ऑल, तो बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे कैंसिल हुए, आता हुआ चीज़ भी, दैट्स द थिंग, नहीं आ रहा था। मतलब जो आता था, मतलब इंटरव्यू के बाद मेरे को लगा था कि यार इसका तो आंसर आता है, बट स्टिल आई वॉज ब्लैंक। क्यों? क्योंकि वही है भाई, पैनिक हो गया था, सिंपल एज दैट, बिकॉज आई वॉज इन पैनिक मूड, सिंपल। तो पैनिक नहीं होना, जितना आता है कॉन्फिडेंटली बोलना, सिंपल। नहीं आता है लीव इट, आता है बोल दो, दैट्स इट, खत्म बात, यू विल बी गुड टू गो, राइट, दैट्स इट। ए हाय, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। what is the job situation in market? I saw opening for 3+ years। रहेगा 3+ years अभी के लिए, ठीक है। अगर आप मेरा यूट्यूब पोस्ट वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उसमें जितना भी 0 to 2 years या 1 to 2 years का वर्क एक्स वाला है, वो सब मैं पोस्ट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब पोस्ट और टेलीग्राम ग्रुप में। तो वो सब में आप अप्लाई करना, राइट। रही बात ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो स्मॉल टाइम फ्रेम के वर्क एक्स के लिए, एक ही टाइप के कंपनीज है जो ये सब टेक केयर करते हैं, दैट इज स्टार्टअप कंपनीज। तो जितना हो सके स्टार्टअप, अगर आप फ्रेशर हो तो स्टार्टअप कंपनी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। दे आर द वन हु टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज जो 0 ईयर 1 ईयर या 2 ईयर के लिए जॉब रोल अप्लाई करते हैं। हाँ, और एक चीज़ आज के डेट में ये मत सोचना कि 0 ईयर मतलब ही फ्रेशर्स के लिए है। 1 ईयर से 2 ईयर भी अगर पूछता है तो भी आप लोग अप्लाई कर दो, ठीक है, तो भी आप लोग अप्लाई कर दो, राइट। तो इट इज़ लाइक 1 ईयर 2 ईयर के लिए भी अगर पूछता है तो भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना सिनेरियो बोल रहा हूँ, जब मैं फ्लिपकार्ट में था तब की बात है। उस टाइम टारगेट करके एक कंपनी है, वो 5 ईयर्स का वर्क एक्स मांगा था, 5 ईयर्स का वर्क एक्स, ठीक है। मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया था क्योंकि मुझे आइडिया था कि कैंसिल होगा होगा, नहीं तो नहीं, कंपनी एक तो है। तो उसमें ही मेरे को कॉल आ गया था, राइट, उसमें भी कॉल आ गया था। उसमें जो मैनेजरियल राउंड है उस पर मैं आउट हो गया था, दैट्स द थिंग, उस पर मैं आउट हो गया था मैनेजरियल राउंड पे, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट एनीवेज कॉल तो आया था, मतलब मेरा कितना था, 1.6 +1 ईयर, मतलब 2 ईयर 2 ईयर एंड 6 मंथ्स का वर्क एक्स था, दैट इज विच इज कंप्लीटली हाफ ऑफ 5 ईयर्स, राइट। मैंने अप्लाई किया था, कॉल भी आया था, मैनेजरियल राउंड में आई वॉज आउट, राइट। क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा था वो मेरे को नहीं आया था समझ में, दैट्स इट, ठीक, दैट्स द थिंग। तो इसीलिए अप्लाई करो, यू विल गेट एन
option for that. Okay, we have one more query. Yes, brother. All the job in the market experience small number of opening for freshers. Correct, but startup companies there is still some hope for startup companies. ठीक है, startup companies there is still some hope for freshers, right? Still hope is there. Okay, we have one query from Jay which is deleted, no worries. We have one query from Adarsh again कि ब्रदर इंटर्नशिप के लिए बेसिक्स पूछेगा या अपर लेवल तक आपके हिसाब से? फर्स्ट स्टार्ट बेसिक्स से ही होगा, बेसिक्स क्वेश्चन। बेसिक्स क्वेश्चन मतलब ये मत सोचना कि बहुत बेसिक्स पूछेगा, बेसिक्स पूछेगा बट काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक? बेसिक्स पूछेगा बट ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, तो ये सब चीज़ का ध्यान देना आप, राइट? ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन ये लोग लेफ्ट जॉइंट से पूछता है, सेल्फ जॉइंट से पूछता है, क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। लेफ्ट जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, फिर फुल आउटर जॉइंट, ये सबसे क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं। अगर ये वाला राउंड आप क्लियर कर रही है और ये वाला पार्ट, पहला पार्ट जो रहता है ट्रिकी क्वेश्चन का, तो ठीक है। इफ़ नॉट तो आई डोंट नो उस टाइम इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट रहेगा, बट अगर ये सब पार्ट आप क्लियर कर दिए, यू आर ऑलमोस्ट आई वुड से 60% डन, ठीक है? और बाकी अगर आप 20% प्रॉपरली सेकेंड राउंड जो है, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा, वो अगर कवर कर दिए, ठीक है, 20%, तो ऐसे ही 80% चांसेस हो गए आपके सिलेक्ट होने के। और इतना ही चांस चाहिए होता है टू गेट सिलेक्टेड इन अ कंपनी, ठीक है, राइट? तो डरने का बात नहीं है। पहला पार्ट जो है जिसमें कि आपको बेसिक्स और ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, वो सब आप ध्यान दे देना, ठीक है, राइट? दैट्स इट। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। ब्रदर मेरे ट्रेनिंग चालू है अभी, तो मुझे सीक्वल, एक्सेल, पावर बीआई तो आता है, मगर मेरी ट्रेनिंग में पाइथन लाइब्रेरीज नहीं हुआ है कंप्लीट। बात है यार। ओके ओके, नो वरीज भाई, नो वरीज। पाइथन के लाइब्रेरीज नहीं हुए हैं, बट मेक श्योर करना आप जो प्रोजेक्ट यूज़ किए हो, ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन है उस पे आप सीक्वल, एक्सेल और पावर बीआई का जिक्र करना। अब बताना मेरे को ये सब चीज़ आता है, तो उससे ही पूछेगा, ठीक है? हाँ, अगर आपने प्रोजेक्ट में पाइथन यूज़ किया हुआ है तो एटलीस्ट उसी टॉपिक को आप कवर करो, ठीक है? पाइथन के उसी टॉपिक को कवर करो जो आपने एक्चुअली प्रोजेक्ट में किया हुआ है, तो जाके वो काम आएगा, ठीक है, राइट? बट जितना आपको आता है, जैसे आपने जो भी पढ़ा हुआ है, आपने बोला सीक्वल, एक्सेल, पावर बीआई, वो सारे चीज़ों को ऑलरेडी आई होप पढ़ा हुआ है, तो बेसिक्स तो आता ही होगा, ऑब्वियसली बेसिक्स आता है, तो उसके बेसिक्स एक बार देख लो और प्रोजेक्ट एक बार देख लो। प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए? प्रोजेक्ट फॉर पाइथन। अगर पाइथन यूज़ किए होगे तो, अगर पाइथन यूज़ किए होगे तो, नहीं तो बोलना ही मत कि पाइथन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी एंड ऑफ द डे में अगर आप बोलोगे, फिर वो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और पाइथन के क्वेश्चंस मतलब अनटिल अनलेस आपका गुड ग्रिप ना हो इसके नॉलेज में, पाइथन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कहीं से भी पूछेगा। उसका जहाँ माइंड सेट रहेगा, या तो कुछ भी अगर वो सेम, कुछ भी अगर वो फंक्शन यूज़ किया होगा आपके इंटरव्यू में आने से पहले वो रिक्रूटर, तो वही पूछ सकता है। क्योंकि पाइथन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लाइक अगर आप खोजने जाओगे तो भाई वो ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, लाइक नॉलेज इज़ लाइक दैट, ठीक है? तो बोलना ही मत फिलहाल के लिए। अगर पाइथन आप अभी रनिंग चल रहा है आपका नॉलेज में, एजुकेशन रनिंग चल रहा है पाइथन में, तो नो वरीज फॉर दैट, ठीक है? जो आप कर लिए हो वही आप बताना, जैसे क्या सीक्वल, एक्सेल और पावर बीआई, दैट इज गुड टू गो भाई। इतना बहुत है भाई, सीक्वल पावर बीआई आता है तो एटलीस्ट बीआई डेवलपर लेवल तक तो आता ही है, ठीक है? एक्सेल, पावर बीआई, दिस
वर्क ऑन सेम बेस, और आई वुड से सेम काइंड ऑफ थिंग। सीक्वल से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, पावर बीआई से वो ज़्यादातर कितना मॉडल व्यू, स्टार स्कीमाज, ये सबसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह ज़्यादातर वो सीक्वल से ही पूछा है, जितना मेरे को लग रहा है सीक्वल से पूछेगा। बट ऑलवेज इट्स डिपेंड ऑन द माइंड सेट। पावर बीआई से ही पूछ सकता है, बट जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, 60% सीक्वल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो 40% पावर बीआई से रहेगा, ठीक है। और अगर वो अलग टाइप का रिक्रूटर रहा तो 60% सीक्वल, 30% पावर बीआई एंड 10% एक्सेल, ठीक है। और अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग खराब वाला हुआ तो एक्सेल से ही बेस, एक्सेल भी समंदर की तरह है भाई, उसमें से भी बेसिक्स में बहुत कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसी में ही वो पूछना स्टार्ट कर दिया और आंसर नहीं दे पाए तो भाई बड़ा दिक्कत है। डिपेंड होता है रिक्रूटर पे। अगर रिक्रूटर अच्छा रहेगा, अगर उसका मन होगा कि हाँ चलो जो कैंडिडेट है उससे तमीज से पेश आए और अच्छे से क्वेश्चन पूछे, तो दिस इज द रेशियो, दिस कैन बी ऑल्सो रेशियो। लेकिन अगर रिक्रूटर ही बेकार हुआ, अगर उसका माथा खराब हुआ, तो भाई 60% एक्सेल से ही पूछ देगा, और एक्सेल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समंदर है नॉलेज का, जस्ट लाइक पाइथन। हर अपडेट में कुछ ना कुछ आते रहता है, और वहां से कुछ पूछ दिया तो अगर एक्सेल आता है ठीक है, नहीं तो फिर नो वरीज फॉर दैट, राइट। Okay, others. Okay, what we have? Hey, hi Ashutosh, welcome to live stream. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कौन सा इंटर्नशिप कंपनी? अच्छा, आप आदर्श से पूछ रहे हो। ओके, वी हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस। अच्छा, आप कंपनी का नाम है, सही है। ब्रदर, सब क्वेरी और विंडोज फंक्शन कितना परसेंट हो सकता है 60% में से? डिपेंड भाई, ज़्यादातर मैं अगर पूछूँ, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछो फ्लिपकार्ट और अमेजन में, फ्लिपकार्ट और अमेजन में अगर आप पूछो तो मोस्टली क्वेश्चन विंडोज फंक्शन से ही थे, मोस्टली। मतलब हाँ, हालांकि वो फ्रेशर्स के लिए नहीं था, नो डाउट। विंडोज फंक्शन से हैवी क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो एक्चुअली, अगर आप मेरे से पूछो किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के लेवल वाज वेरी नाइस। मतलब अगर एक्चुअली अगर किसी को देखना है किसका नॉलेज अच्छा है फॉर दैट एलपीए, मतलब जो भी एलपीए के लिए मैंने अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट, जॉब पोस्ट, वो एलपीए के लिए भाई एपिक क्वेश्चन, एपिक, मतलब इम्प्रेसिव क्वेश्चन। अगर मैं आज अमेजन में सिलेक्ट भी नहीं होता तो भी मेरा यही सेम आंसर होता। क्वेश्चंस वर एपिक, ठीक है। ऐसा ऐसा केस स्टडीज के क्वेश्चन पूछे उसने कि भाई एक्चुअली लगा कि यार दिमाग लगाना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। और अगर आप बोल रहे हो फॉर द फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सीटी सब क्वेरी से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, ऐसा नहीं। अगर आप 60% में कितना पूछ रहे हो, नॉट 30 भाई, 25% इससे रह सकता है, क्योंकि ये मेन है भाई सब क्वेरी सिटी। आप कोई भी डेटा सेट देखो, ये तो डेटा सेट बड़ा होगा तो ये रहेगा सब क्वेरी सिटी। विंडोज फंक्शन मे बी 10 to 15%। और हाँ, एक चीज और एक ऐड ऐड करना चाहता हूँ, अगर अगर विंडोज फंक्शन से आपका 25% क्वेश्चन हो गया वाइस वर्सा फॉर विंडोज फंक्शन, ठीक है, तो 200% श्योर लिख के ले लो, सीटी और सब क्वेरी से पूछेगा ही। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, रीजन क्या है? जो भी आप विंडोज फंक्शन में, विंडोज फंक्शन में जो भी आप चीजें यूज करोगे, जो भी चीज यूज करोगे, जो भी डेटा आप फाइंड करोगे, सीटी या तो, सॉरी सॉरी, आई मीन टू से विंडोज फंक्शन में, तो भाई उस विंडोज फंक्शन के डेटा को यूज करने के लिए इट इज ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सीटी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली देयर इज नो एस्केपिंग फॉर दिस। मतलब कि
आपको आपने ऐसे विंडोज फंक्शन लगाया, कोई भी क्वेरी लिखा, आपने विंडोज फंक्शन लगाया यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ विंडोज फंक्शन लगाया। अब उस विंडोज फंक्शन में एक डेटा आएगा, आउटपुट ऑब्वियसली आएगा, राइट। सपोज आपने रैंक लगाया है तो 1 2 3 करके। अब इस डेटा को, या तो मैं बोलूँ इस डेटा को अगर आपको यूज करना है कोई भी चीज के लिए, फर्दर आउटपुट के लिए, ठीक है, फर्दर आउटपुट के लिए, तो ऑब्वियसली आपको सीटी यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेरी से ही डेटा लोगे और आउटपुट फाइंड करोगे, तो सीटी तो 200% श्योर क्वेश्चन पूछेगा अगर विंडोज फंक्शन से स्टार्ट किया और विंडोज फंक्शन से क्वेश्चन पूछा तो। क्योंकि विंडोज फंक्शन का सारा चीज आप सीटी से ही निकालोगे, सिंपल सा बात है। और सीटी पहुंच गया तो सब क्वेरी तो पहुंचेगा ही, बिकॉज दे कम्स हैंड इन हैंड, सीटी और सब क्वेरी। बट अगर फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो सब क्वेरी से कितना, मैं तो बोल रहा हूँ 25% पूछ सकता है आउट ऑफ 60%। ज़्यादातर वो आपका जो बेसिक्स, जैसे मैं बोला ना ट्रिकी क्वेश्चन, वो ज़्यादातर जॉइंट्स से ही पूछा, क्योंकि उसी में ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर हाँ, यूनियन से पूछ सकता है, यूनियन, यूनियन ऑल, ये सब चीज़ से पूछ सकता है ट्रिकी क्वेश्चन, जॉइंट्स, यूनियन, यूनियन ऑल। उसके बाद फिर कंस्ट्रेंट से पूछ सकता है, कंस्ट्रेंट जैसे ये सब आपका नल हो गया। फिर कीज हो जाएगा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। फिर आपका हो गया फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, ये देख लेना। क्योंकि कंस्ट्रेंट तो पूछेगा, दैट इज द बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स थिंग, और वहीं से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। बट नो नीड टू वरी अबाउट, जितना बेसिक्स आपने पढ़ा है यू आर गुड टू गो। जाओ और आंसर दो, मैं तो बोल रहा हूँ, इतना टेंशन लेने का बात नहीं है, जस्ट चिल एंड गो गिव द आंसर। जितना पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज करो, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, उसको एक बार रिवाइज करो और जाओ, दैट्स इट। और हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट में पाइथन यूज़ किए होगे तो पाइथन जितना यूज़ किया हुआ है, जितना टॉपिक आपने पाइथन में यूज़ किया हुआ है, उसी टॉपिक्स को आप एक बार स्टडी या तो रिवाइज करो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में आएगा और आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट में मैंने ये सारे रिक्वायरमेंट्स निकाले हैं, पहला दूसरा सीक्वल से निकाला है, तीसरा चौथा पाइथन से निकाला है, तो पूछेगा कि अच्छा पाइथन में आपने क्या क्या यूज़ किया है। तो उसी यूजेस से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दैट्स द थिंग, दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन, राइट। Okay, we have one more query. Can you tell us about some of the interview questions? Interview questions mostly for, if you ask me, for my companies, whatever I have worked for, ये सारे जितने भी एमएनसीज हैं, सारे केस स्टडी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यू से भी। दे विल गिव यू केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, ठीक है। केस स्टडी से पूछेगा, दे वोंट आस्क यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइन और फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मतलब टॉप ऑफ द लाइन और एनीवेयर, आई मीन बोलते हैं ना कि हवा में क्वेश्चन पूछना जिसको बोलते हैं। जितने आप बड़े कंपनीज में शिफ्ट करोगे, मतलब इवन दो आज के डेट में तो कॉग्निजेंट वगैरह, कॉग्निजेंट, टीसीएस, ये सब में भी केस स्टडीज पूछना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो केस स्टडीज के अंदर से ही दे विल आस्क यू क्वेश्चन। और बाकी नॉर्मल स्टार्टअप कंपनीज जो हैं, ज़्यादातर वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, उतना केस स्टडी वगैरह पूछते नहीं, बिकॉज उनको वैसे ही लोग चाहिए जो बेसिक्स में बहुत स्ट्रांग हो, जिनका बेसिक्स ए क्लास हो, मतलब बोलते हैं ना 5 स्टार रेटेड, जिनका बेसिक्स 5 स्टार रेटेड हो, दे नीड देम, दैट्स इट। तो वो उतना केस स्टडी में जाके इतना, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। वो बस आपको ट्रिकी क्वेश्चन बेसिक्स का पूछेंगे, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, राइट। दैट्स द थिंग।
Okay, we have one more query. Please make some guide notes with important question for DA interview. DA इंटरव्यू के लिए अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, तो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है इंटरव्यू का प्लेलिस्ट, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको शोकेस करता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सेंड यू द क्वेश्चंस हियर, आई मीन सॉरी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, क्या प्लेलिस्ट का लिंक। जस्ट वेट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। या दिस वन, ये एक्चुअली हिंदी में है, इंग्लिश वाला भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। दिस फॉर हिंदी एंड दिस इज फॉर इंग्लिश, ठीक है। ये बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि बेसिक्स क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही पूछा जा रहा था, राइट। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब अगर आप कवर करोगे फ्रॉम ए टू जेड, तो आपका बेसिक्स एटलीस्ट कवर हो जाएगा, राइट। अब बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आजकल सारे एमएनसीज तो यही केस स्टडी में ही जा रहे हैं ज़्यादातर। कोई भी ये लोग हैकर रैंक वगैरह कुछ भी ले लेता है, मतलब बहुत सारे कंपनीज है, हैकर रैंक वगैरह XYZ, ये सारे वो लोग ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन और वहीं से सारा क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज़ लाइक दैट, दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड वहीं से ही वो लोग देखते हैं कि आता है सामने वाले को कोई नहीं, दैट्स इट। सर मेक सम गाइड नोट्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सर केस स्टडी मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी मीन्स आपको एक सिनेरियो सिचुएशन दे देगा, ठीक है। लाइक दे विल गिव यू सिनेरियो और सिचुएशन, मतलब अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स चेक किए होगे, जो प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ वो प्रोजेक्ट्स एक्चुअली रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, ठीक है। एंड मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो हर मेल में रिक्वायरमेंट्स आता है, मतलब 2 रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट या 1 रिक्वायरमेंट, राइट। बट द थिंग इज, जो केस स्टडी रहता है, केस स्टडी में हैवी रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन रहता है, दैट्स इट। हैवी रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन रहता है, दैट्स यू आर गुड टू गो, राइट। दैट्स द थिंग, एक हैवी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हे हाय, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। So we have one question. I have learned Python. What should I do next? DSA or development or oops? Like let me tell you one thing. Whatever you are interested in, if you are interested in data analytics, you no need to go for DSA. Let me tell you, DSA no need to go for all this. ठीक है. Oops. If you understand just the basics part, just basics. Even though if you don't want to learn this, no worries for that as well. ठीक है। DSA, so if you want to go into data analytics, DSA is not required. You just need to learn or take care of the function in libraries, ठीक है। लाइब्रेरीज मतलब जैसे numpy, pandas, because these are mostly used for filtering data, data cleaning kind of thing. Then visualization के लिए matplotlib, seaborn, these libraries are good to go if you are going for data analytics, ठीक है। But हाँ, if you are going for web development or kind of thing, web development, or I would say software development, then this oops का पूरा डिटेल, देन DSA, ये सब चीज़ तो चाहिए भाई, राइट, ऑब्वियसली।
ठीक है। और ऊप्स में अगर आप पढ़ भी रहे हो तो कितना क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह यही सब चीज़ ही है ऊप्स में, जितना मेरे को आइडिया है। क्लास ऑब्जेक्ट देन इनिट, इनिट कंस्ट्रक्टर आई मीन टू से, क्या क्या है इसमें, क्लास ऑब्जेक्ट देन इनिट, इनिट मतलब इस टाइप से, सॉरी। इनिट मतलब जैसे कि आप डेटा वगैरह स्टोर करते हो, जब ऑब्जेक्ट वगैरह आप क्रिएट करते हो, ठीक है। when object is created and data is stored, that time init is required. Like this kind of things you can learn if you want to, right? And also functions, that def wala functions and all, ठीक है। That's the thing, these are the basics one. If you want to learn, ठीक है, good to go. If not, we have functions in libraries, they will help you out in that, right? That's the thing. Okay, so anybody have any more doubts? Okay, you all ask your doubts. By the meantime, let's jump into the question. So, what's the question all about? Question is all about like numbers. क्या है ना, mobile numbers I mean to say. ठीक है. So, what kind of mobile numbers we have in front of us? We have, sorry, different kind of mobile numbers which are having lots of issues. ठीक है, lots of issues are there. How to clear it out? Like we have learned already, we have to take care of slash d for numbers, right? We have to take care of slash d for numbers. So obviously we will be taking care of the regex replace and then slash d, wherever there is no numbers, give an empty string. That's it, you will get the output, right? That's the thing. किसी और कुछ डाउट? Okay, we have one query from Vinayak. Hi Vinayak, welcome to live stream. Hi Vinayak, welcome to live stream. 3 years of experience in insurance sales in banking sector सही है. Uh, due to sales pressure and frequent, obviously sales का pressure तो it's unusual, I know. You अच्छा 2021 में you left the job, not work anywhere, done MBA. No worries for that, just start again. Like if you are learning something, if you have some skills, technical skills, then go for it. If you have any technical skills, go for it, I would say, in startup companies and all, take, because at least you are having experience. But due to your work experience gap, maybe the MNCs might not give that much clarity to your either CV or either resume, but no need to worry about. Startup companies always they take care of it, and they will be really happy if you have a good amount of work ex, ठीक है. That's the thing, right? That's the thing. But these are the lifesavers, I would say, go for it. Okay, we have one more query. We did not complete the recursive city बताया ना, like related to grandfather and all, like grandfather, father and son, and family positioning, suppose it is like that, ठीक है. और if you can go take care of the कंपनी का डिटेल, मतलब कंपनी रिलेटेड, like CEO, grandfather,
then wait, grandfather, father, and अरे क्या लिख रहा हूँ, sorry, I'm really sorry. If you go for this CEO, then general manager, then manager, then employee. ठीक है, like this. मतलब कौन किसका मैनेजर है, काइंड ऑफ थिंग, लाइक दैट. सॉरी. ठीक है, we have went for this, right? So anybody have any more doubts? Okay, we have one more. Did MBA distance? Can I get a functional BA job in startup mid-size company will pay less salary? See, regarding the salary, I would say right now don't go for salary because of this job gap. At least means I am not saying कि whatever salary they say go for it. If they are matching the salary, then just ask for more. Just ask for 10% kind of thing more and then join. ठीक है, ठीक है. Ask for less and then join. No worries for that. ठीक, no worries for that. ठीक है. Okay, we have one query. But how we found the relationship between grandfather, father, and child? Why we need this in SQL and how will I get to know like when to use recursive city? Uh, Recursive city related to questions, I would say it will be whatever questions you have. If you can give, I can give it to you. But it is like if you want to find the suppose what kind of question, let me charge it. Suppose for this only I'm saying for this grandfather, father, and child. ठीक है. Suppose you want to find and let's give indexing number 1, 2, 3, and let's give null. First position, second position, like that. Suppose if you want to find out, if you want to find out the series in a family tree, ठीक है, then you can use recursive city and use it. ठीक है, then you can use recursive city, right? Then you can use it, right? But how to use it? Like suppose I'm saying, like I told you, using union and union all. I will write suppose with recursive t1 as. Matlab this is the city and inside this I will write select id, then family name, then I would say this suppose rank. I am giving here a rank. Don't confuse it as a rank or dense rank. It is normal rank. ठीक है, family name and rank. After that I will do from the table name. ठीक है, from the table name where family name is null. Family name is null. ठीक है. Why I'm saying this? Why null? Let me tell you one thing. Why null? Because I have told you starting you have to do with the higher authority like either CEO or either grandfather, like that. For the two examples that I have told, CEO was the highest. So here who is taking care of that? Null. Grandfather is the highest. There is no one above it. ठीक है. When there is no one above it, so its null will be given to you in the data set. Simple. So we are starting from select everything from the family where the family name is null. Then I will write union all.
because we have to find out the family tree from the starting. Suppose I will write union all, then I will write this select everything from the same table. For what table we have used already, from the same table. Okay, same table, there is no different table in that same table. We will do a self join, so we will give a and table name b. On we will write a dot the rank is equal to b dot the rank. Okay, it is like that. What will happen? See, it is like grandfather, father, child. It will show null 1 2, and when you join it, it will show the same thing. Grandfather, father, child. Okay, it will show the same thing. It will like null 1 2. Right now what will happen? In the union all, you have given the starting phase where the data is null. So for data is null, it will like grandfather will come in first place, first row. Second, it will check what id is matching. What id is matching? So it is like it is matching this thing, this id with this id. So father will come into picture. Okay. Second, what id is matching? 2 and 2. So child will come into picture. In this way you will get the data, and how this two data will be taken care of the join wala query that we have written. This data, let me do it properly. This data will be taken care by the join, and only this data, null wala data, will be taken care with the union all का first query. ठीक है, union all का first query. So it is like first query for the null will give you grandfather का data, then from the join query it will give you father and son का data. ठीक है, that is the thing, simple. And at the last, obviously, like I've told you in Windows function, you have to use cts, sorry, whenever you use cts direct, you have to showcase the data, you have to write select everything from t1, because I've given t1 as the ct name, that's why. So this is how you will get the output, simple, right? That's the thing. Correct. So anybody have any more doubts? Okay, we have one query. BA analyst trainer saying do the fake experience and join BA in startup companies and get high salary. Startup companies will not do BGV strict. Is it right? No idea, bhai. Related to startup companies, I don't know about like what kind of level they do for the background verification, because the thing is I have never went to any startup companies in my life. That's the issue. Okay. I don't know what's the scenario of background verification for startup companies. One thing I know, third party is always involved in background verification. Always third party is involved. That I know. So if
startup companies are like, okay, leave it, no worries for that, then yeah, it is good to go. Good to go. Okay. But I don't know like what kind of third party they might be having, and what kind of final decision do this startup companies take related to BGV. Related to BGV. Okay. Right? That's the thing. Okay, we have one query. Thank you for mentoring. Arey, welcome, bhai. Welcome. Welcome, bhai. Thank you for joining my live stream. Once you have, okay, we have one query from Jay. Once you have a good experience, I would like to ask, do you use recursive city on a regular basis? Rarely. If you ask me, I have used recursive city in Hindalco. Okay. And let me tell you one thing, I have not used that. I have seen the data analyst using it. So I have asked him, what is all this all about? So if you let me tell you one thing, I was working in supply chain domain in Hindalco. Okay. So in this, they used to find out the aisle name and the location from that. Okay. Right. In inventory, there are aisles like this where the products or the goods are kept like this. Okay. A kind of, you can say, a kind of, just imagine as a pathway. Okay. So in this, each and every aisle have a location. Suppose like A1, A2, A3, A4, and this is B1, B2, B3 kind of thing. So in this way, to find the data, like what data stock check has been done, he had to go to the aisle number in SQL, and then he used to give us the data related to the location number. Location number matlab A1, A2, A3, B1, B2, B3 like this. So it comes like that. Okay. That's it. Nothing else. Means if you ask me, I haven't used any time in Flipkart or Amazon. Trust me, I haven't used this. हाँ, but I knew कि इस type का होता है. And this is just a normal mixture of joints and all. And हाँ, in this you have to write with recursive. ठीक है, with recursive लिखना पड़ता है. ठीक. In with recursive, what happens? The sequel goes from the start point and end where the last connection is there. Wherever the last connection is there, sequel stops there because of this recursive thing. ठीक है? That's it. Nothing else. Right? ठीक है? Okay, we have one more query. Upload startup companies hiring for DA role regular basis. Related to DA role in startup companies, see, whenever I get a job post in LinkedIn, or I would say in through my friends, like my friends are some of my friends are in working in this, क्या बोलते हैं, ग्रुप, मतलब वर्किंग नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, नॉट वर्किंग, दे आर इन द जॉब ग्रुप. ठीक है. सो जॉब ग्रुप मतलब व्हाट्सएप में या तो टेलीग्राम जॉब ग्रुप में दे आर देयर सम ऑफ माय फ्रेंड्स. ठीक है. सो वॉट एवर जॉब पोस्ट दे सेंड, बिकॉज आई टोल्ड टू देम related to freshers. ठीक है. Related to freshers, whatever job post you will be having related to DA, just send me so that I can send this data to you all through YouTube post or through Telegram. ठीक है. So whatever they send, I will just copy and paste it in my YouTube channel. Or if I get
personally, where will I get? Mostly in LinkedIn. I will share it to you all. ठीक है? Right? No need to worry about. And I mean the genuine one. ठीक है? मतलब it's not like कि just write interested kind of thing. मतलब wherever they say ना write interested या comment your mail ID, not all those things. ठीक है? These are just मतलब they are just kind of, I don't know what kind of post it is. Better don't entertain this. Wherever they say to write interested or mail ID or comment your name don't go for all this. Wherever there is the HR name with @company.com, I mean to say company ka name and .com, I mean to say domain name should be company name and proper HR name should be there with good history of LinkedIn post. I mean the LinkedIn profile of HR. It's not like ki some anyone who have written ki I am HR in this company, I am posting this. Company should be like having a good past record. Good past record matlab employee should be there, hiring should be going on like this kind of companies, and that employee or that HR should be there in the company posting on a regular basis kind of thing. Then it's okay. That post I apply. Otherwise, I get lots of posts where people say to write interested or comment your name or mail ID. Actually they are of no use. They are same as like easy apply. ठीक है? इजी अप्लाई में भी यही होता है जो ये लोग करवाते हैं. इजी अप्लाई में खाली आपका सीवी रेज्यूमे जाता है, कन्वर्जन बहुत कम रहता है. वेरी लेस CV resume get converted, very less. Right? So it is same like that. Don't go for all this stuff like interested name या mail ID लिखो, good to go. No, no, not like that, bhai. Don't waste your time in all this. Right? So that's the thing. Related to startup companies, whatever I get, genuine one, actually genuine one, which is actually useful with proper email ID of the HR or something, that thing I will post. Other thing, the commented वगैरह thing, it's, I would say, don't go for it. Right? That is all about it. Correct. I hope everything is going good. Okay.
So anybody have any more doubts? Anything? Just ask here. I hope everything is working fine. So okay, let's go for the data cleaning wala part. Let's go for that. Let's go for that. For numbers, yeah, like I have told you, you have to use regex p replace. ठीक है? The column name and just write the numbers. Whatever numbers would be there, only take this. Apart from this, just give a empty string. Just give a empty string and move forward. So what will happen, whatever this plus sign, like plus in plus 91 or whatever the space, this will all get removed, and the text data matlab data type will be changed to numbers. Why numbers? Because of this slash d. ठीक है? Yeah, okay, we have one more query. Whatever job roles in LinkedIn post always 100 plus applied in minutes. What is the solution or any alternative? Alternative, I would say Naukri.com. But let me tell you one thing, in Naukri.com, same thing would be happening. Okay. In LinkedIn, it is showing 100 plus applied. In Naukri.com, the difference is it is not showing how many people applied. I think it shows somewhere. I think it shows, but I don't think, आई थिंक दिखाता है शायद Naukri.com में. इसमें भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि लाइक कितने लोग अप्लाई किए एंड ऑल. ठीक है, जैसे लिंक्डइन शो करता है ना 100 प्लस अप्लाइड, और या तो इस तरीके से भी टाइम दिखाता है लाइक 24 आवर्स एगो, या तो आप बोल सकते हो 10 आवर्स एगो, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सो what can we do? Just apply, that's it. That's it. We cannot stop others to apply, right? We cannot stop others to apply. We, the guy who has applied on the first place, his or her CV or resume will be checked. The guy who has, or the candidate who has applied on the 100th place, their CV or resume would be also checked. But the main thing is, like as I've, like as you know, everyone knows one thing: CV and resume is being checked by ATS. Okay, so whoever having a good quality CV or resume, they will have a good chance for this. Let me just, they will have a good chance for this. That's it. Right? That's what I'm trying to say. It is like that. Okay? Everything is checked by ATS, and whatever things are, like whatever CV or resume the company received, these all are checked. And then some, like I would to say like 100, suppose 100 has given. Out of that, they will filter out almost 50. Out of 50, they will filter out almost 20, and out of 20, they will filter out 10, kind of thing. Out of 10, everyone will get a call. Out of 10, they will reject from their own side, 6. And out of 4, 2 will be rejected and 2 will get a call. It is like that. Or just think one thing, like for one vacancy, how can they take each and every one? So it is like everything is on filtration method. Okay, everything is on filtration method, and out of 2, 1 will get selected from this 2. So it is like that, right? It is like that. And thanks to this, everyone started doing BTech, everyone took IT,
and all. So it is same for everyone in today's scenario, not only today's scenario, from 2020, from the COVID scenarios like 2020, 2021. Most of the companies, when they moved to automation kind of thing, automation especially for the non-tech domain, most of the candidates, most of the people have started taking care of some skills, they've started learning some skills, okay? And everyone is moving to technical domain right now. So it is like that, everyone is learning some skills right now, and that's it, this is happening for everyone. So you are not the one, I mean to say, you are not the chosen one. Everyone in today's scenario, also everyone in upcoming scenario, will be facing this kind of things. So it is better to be best in your skills, that's it. Best in your skills, that's the thing, that's it. That is only what will keep you forward than most of the group, okay? Because let me tell you one thing, let me tell you one thing, if you take interview of the 100 employees, or the 100 applied, out of that mostly 20 to 30 will be kind of eligible candidate, who will be actually eligible to work for that vacancy, okay? So always, that's why like people say like this, always be on the 1% kind of thing. Not 1%, at least take care of the 3% kind of population. Be best in the skills, whatever skills you are learning. If you are learning SQL, make sure you are having what happened. uh, what was that? uh, Whatever things you are learning, make sure you take care of the skills in a good way. I mean to say, take a good grip of the knowledge of this tool, whatever tool you are learning. It's not only C, like not only SQL, it's C plus plus or Java, whatever knowledge or whatever skill set you are learning, be best in that, okay? Be best in that. Means if someone is asking you from A to Z of whatever topic or whatever skills you have, you should answer it on the flow, that's it, that's it, right? Make sure you do it. Or if not that, because right now you have only seen, everyone sees that each and every startup companies also have this 100 plus post, let me tell you, just for one vacancy, or maximum four vacancy kind of thing, okay? It is same everywhere, so it's not like it is happening for you, it is same everywhere. So no need to worry about it. Just become best in whatever thing you are learning, and you are good to go. And for becoming best in whatever thing you are learning, it is like daily practice, daily and consistent practice required. Daily consistent practice, daily the same boring thing is required to do. Same boring thing, same boring questions, same boring theory, same boring practical, same lead code questions, okay? You have to do, then only it is like good to go. And also you have to be consistent in applying, consistent in applying. Just wait for your turn. Whenever your turns come, give your best shot, that's it. Give your best shot, that's it. So for giving a best shot, just be prepared, right? This is what I have done in, I mean to say, this is what I have done when I was learning SQL or Python like this. And even though the worst phase was the COVID phase, where even after having work experience, I was getting rejected in most of the startup companies and all.
Most of the startup companies, most of the fake companies, lots of fake companies came. But still, after 7 months of rigorous and continuous applying, I get into Flipkart, and then it is like good to go. That's it. Then Flipkart, then Amazon, then the clients, they have taken a good care of my skills. That's it. That's it. Nothing else. No magic, nothing. Just rigorous practice and you're good to go. Right. So, okay, let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज एक्टिव यस और नो? अच्छा, तो इसमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि जो एम्प्लॉय है ना, हाँ, और सॉरी जो कस्टमर है वो एक्टिव है कि नहीं, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज देयर, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज देयर, लेट्स चेक दैट आउट. इसको मैं हटा देता हूँ. वेयर इज इट? हाँ, let's check that out, what kind of data is there and what can be used. Let's see. So for that we have some yes, yes, one, no, zero, yes, no, true, false, blank. ठीक है, simple. So what we have to do, wherever there is yes, y, one, yes, it will all come in true format. True matlab yes format, or I would say it all comes in active format. ठीक है. And the remaining one, remaining मतलब not blank, remaining one मतलब no, zero, n, this all comes under non active format. ठीक है. Also there are two more things, true and false. So wherever there is true it's active, wherever there is false it's not active. ठीक है, simple. For blank it is null because we don't have data for it and we cannot find out any kind of uh, good output from this null data set. ठीक है. ठीक है, that's the thing. So let's go and start it, and for this we will check like can we only use case when, obviously, because it's we are not filtering or taking care of something from the data, I mean to say from inside the data. ठीक है, nothing from inside the data, it is just a data we have to filter, just whole data we have to filter. If we want to find out something from inside the data, yeah, then we can say this regex kind of thing can be used, this regex kind of thing can be used, but it is like whole data set we have to change, or we are giving some requirement, so it is like that. Okay, so whole data set we have to change or we have to give the requirement. So for that, best part is take care of case when. That's it. Okay, let's do that and let's see do we get any output from it. Like output matlab proper output, not any output. Okay, let's check that out. In that meanwhile, anybody have any doubts? Just a minute, let me check. The battery भी यहाँ डाउन हो रहा है.
Let me check any mail or something do we receive from oh bhai. Just wait a minute. Check. Hmm, hmm, hmm. Okay, no worries for that. हाँ, चलो ठीक है. So the thing is, let's go and check this special thing of case when without using regex. Let's see if this give us a proper output or if it give us an error. Acha, I haven't shown you this kya. No worries for that. Let's see, select everything, regex p replace what's the raw phone raw. Then we have to write, where is it, slash d. Wherever there is no numbers, we have to give an empty string from, wait, my battery is going to be dead right now. Yeah, it's good to go. Hmm, ठीक है. From this, let's see, do we get the output? Let's not take everything one raw and let's see this. Yeah, so this is the output that we have received. Wherever there is a space or there is a plus kind of thing, that will be removed because obviously that is not coming under numbers. Okay, that is not coming under numbers. That's it. Hey, hi Shiva, welcome to live stream. Just a minute here. Yeah, welcome to live stream. I explained it rows between. अच्छा हाँ, अच्छा, correct. ठीक है. तो it is like, just a minute. हाँ, rows between unbounded preceding and current row. ठीक है, current row. ठीक है. First thing first, let's understand what is the meaning of these two words. First word is this, unbounded preceding. ठीक है. In this also we have two words. First preceding, then unbounded. So what's the meaning of preceding? Suppose here it's B. ठीक है. तो above B what is there? A. And after B what is there? C. So the thing, like suppose I am standing here. Behind me who is there? It is like that. Front of me who is there? So behind B it is like A. So preceding, and after B it is what?
following. ठीक है. These are the meaning of preceding and following. Now let us understand one more thing, the use of unbounded. Unbounded means there is no boundary. There is no boundary. ठीक है. Suppose I ask you, suppose example I am saying, Shiva, you are standing here, right? You are having two chocolates. Before you, there are three people, and after, let me just give a different number so that there won't be any confusion. ठीक है. Suppose, ठीक है. So if I ask you simple like, Shiva, how many people in front of you, or less, how many people behind you are having chocolates, give the sum of it, and it should, and the total sum should be included the chocolates that you are having. You will be like, okay, let's go to A is having four chocolates, B is having two chocolates, C is having three, and you are having two. So it is like unbounded. There is no boundary in this. Okay, there is no boundary. Whatever is the last point from you, whatever is the last point from you, you have to go there and you have to take the total sum of this plus the current one. So it is like that. You will go to the last point, and last we have A standing and current is you. And what I have asked you, I have asked you like how many people are standing behind you. Go and ask them how many chocolates they have, plus give the sum of all their chocolates plus how many chocolates you have. So it is like 4 plus 2 plus 3 plus 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So total 11 chocolates. So it is like same as this unbounded preceding. Who comes in unbounded preceding? A, B, C, and current row. Current row U. ठीक है. Same like that. For the question which I have told you, मतलब for the, I mean, uh, the question that you have asked, I made a video on this. For that, it is like this. Suppose A, B, C, D, like that. Suppose I'm saying. Let's take that question as well. No worries for it. Let's take the proper question. Okay? It is like 101, 101, 102, 102, 103. Okay? These are the employee IDs. ठीक. Employee IDs का you have told order by date ना. आज कितना है 30. Let's take 28 December 25, 30 December 25. For 102, let's take 27 December 25, and let's take 29 December 25. For 103, let's take 2 December 25. ठीक है. Let's take the sales. Oh bhai. For 28, suppose 101 had done a sales of 200 rupees. Example, 38 done a sales of 300. 102 had done a sales of 500. On 27, on 29, 200. 103, 700. So Windows function, what it does, it goes and check how many employees are there having same number. So three windows will be created: 101, 102, and 103. Okay. So right now let's check each and everything for every employee. Okay. 101, whatever date they are having, 28 and 30, 28 December and 30 December. Okay. I'm just writing like this.
एंड इसमें क्या है 200 एंड 300, ठीक है 200 and 300, and your question was to find the sum of sales. So in this, suppose for the current row, for this 200, is there someone preceding, like is there some 101 candidate, or I mean employee, those who have any sales data before 28? No, na. So it is what? Preceding, unbounded preceding is 0, current row is 200. So it is like 200. Now SQL will come to 101 का ही window में we are working for 101 because three windows has been created. First, second, and third. Three windows has been created. So for one, I mean the first window, is there anyone having 101 ka employee ID before date of 28? No one, right? So obviously it will be 0. 0 plus 200, 200. Then for 101 on 30th December. Okay. Is there any sales before 30th December? Yes, there is on 28. And what was the sales? 200. Okay. This is unbounded preceding. So it is like that 0, 200, 300. It is like that. So for 200, unbounded preceding is this. For 300, unbounded preceding is this. Okay? Simple. So for 300, it is 200, or let me tell you very properly like this. So for 300, unbounded preceding will be 0 plus 200 plus 300. Okay? So it is 500. Okay, Shiva, I hope you get it. Full unbounded preceding मतलब 200 के भी पहले starting से, like I told you here, starting से, from here starting everything. ठीक. So for 101 there is no one here, obviously 0 is there, means 28 के पहले कुछ नहीं है, that's it, that's the thing, right? 30 के लिए है, that's it. Same goes for 102. ठीक है. I hope you get it till here. Should I move forward with 102 or should I make sure you understand? Should I make sure I understand it? Right. You just answer me. By that meantime, let me cover it up. For 102, it will see 102. Is there any data before it? No, there is no data. So 0. Then whatever number is there. Sorry. Number 2, number 1. So 0. Okay, we have one query. Rows between one preceding and current row means it skip one row in value. No, no, it's not like that. Let me tell you one thing. Okay, let's take an example of this. Okay, with an additional thing. Okay, suppose the data has been updated. Okay, suppose the data of this all employees has been updated. Okay, and we have received just say 28 December, 30 December, 31st December. This is the updated data. ठीक है. For 102, 102 कौन कौन सा डेटा है? 27, 29 और 2. ठीक है. 27 December, 29 December और 2 December. ठीक है. अब यहाँ सेल्स का अमाउंट ले लेते हैं रैंडम. आई एम टेकिंग रैंडम. 200, 300, 700. ठीक है. Now let's explain in a practical way. Let's forget about this. We will come to this afterwards. I mean to say, suppose there are 3 person before you, A, B, C,
then you are there, then A B C D E. ठीक है. So what you told, it's like one preceding, right now one preceding and current row. ठीक है. One preceding and current row, and I ask you, ठीक है, Shiva, from you I want to find some data. You told, okay, what data do you need? I will tell you, from you I want one preceding and current row. So it's like one preceding and current. So let's half do a part of this two data. This is the preceding values and these are the following values. ठीक है. So what we need, one preceding and current. What is one preceding? Is C. Let's write the number of chocolates here. So one preceding is what? C. C is one preceding. So 2 will be included and current is 5. So you will say, acha, above me, like behind me, there is C. And C was having 2 chocolate. And you are having how many chocolates? 5. So if I ask you, okay, what is the total sum of chocolates with one preceding and a current row starting with Shiva? You will say 2 was the like one preceding one is having 2 and me 5. So it is 7. It is like that. Same thing happens here. In this, every row I would say 101. Is there anything one preceding? No, no. 0 plus 100. Then come to second row. For 200, is there any one preceding? Yes, it is there. Only one preceding. Is there? It is. Yeah, it is there. 100. For what date? 28 December. And 200 is the current one. Now let's come to 500. You will say ki acha, for 500 there are two preceding. Total, not two, even though three, because zero you are including. Two preceding, but you have been asked ki one preceding chahiye, only one. You will go ki acha, one preceding is 38 December. This is the one preceding. Current row is 500. So it goes like that. Now comes for 202. For 202, is there anyone preceding? Actually, no. Why? Because 202 is one new window. Sorry, 102, I mean to say. Sorry, 102, not 202. For 102, it is a new window. And before 102, there is no data available for that. Means before 27th December, there is no data before that. So it is 0. So it is like 0 plus 200. And let me tell you one thing. This is for 102 ka window. ठीक है? Let me change the color so that it is easy for you to understand. Then comes one preceding and one following is like 200 plus 300. ठीक है? This is the thing. Now for 103, is there any preceding? No. Only one data we have. That's why. Plus 700. So, ठीक है? This will be your output in this. ठीक? Like this. It is for Windows function. Oh, sorry for that. Control Z. क्या हो गया? हाँ, Control Z. Yeah, ठीक है. It is for that. For 101, this will be the output. For 102, this will be. Let me remove this for proper no overwriting. Let me take and paste. Okay, leave it. Let's do it. Yeah. So this is the thing, right? 0 plus 200, 200 plus 300, and 0 plus 700. Okay. This is how things goes on for one preceding and current row. Okay. Like whatever you are saying, whatever you are asking, just do it. Simple as that. If you are saying one preceding, current row, go for it. Two preceding and current row, go for it. Sometimes you will get some queries where you have to write two preceding and one following. ठीक है.
like this kind of scenarios will be there. Take two preceding and one following kind of scenarios will be there, so make sure you take care of that. Just a minute, let me message me something to my client. Hmm, hmm, ठीक है चलो correct. So like this kind of question will be faced by you in interviews, so take care of this. And what it is all about, preceding and following. Two preceding means it is like be like that. Two preceding, one following, following one, preceding two, and in this current row will also get included. Although we are not writing current row in between this, it is like current row is included by default. ठीक है? By default current row is getting included. Make sure you understand this. Correct? ठीक है? That's the thing. Make sure you understand this. Two preceding and one following का मतलब two preceding, one following and current row is included. Although we are not writing like this, two preceding and sorry, current and one following. We are not writing like this, but this is the same thing we are doing. ठीक है? How it is like two preceding and current and one following. We are not writing like this, but it is like if you write two preceding and one following, this things gets included. ठीक है? Current row also get included. So make sure you understand this. ठीक है? Make sure you understand this. Right? ठीक है? Any more doubts? Anything? Any more doubts? Sorry. Anybody have any more doubts in the live stream? Okay, we have one query. Hi, welcome to live stream. Hi, welcome to live stream. Is there a way to skip the current value sum of? हाँ है भाई. Yes, yes, there is a way. Good question by the way. Good question, good thinking. Good question. ठीक है. Simple. I am taking your example. ठीक है. Suppose it is like this. Take, and it is like we have some chocolates with everyone. ठीक है. If I ask you कि no, it's not like wait. हाँ. If I ask you कि to find the sum of all the candidates who are above you with the chocolates, like sum of all the chocolates of above candidate, but you should not get included, what you will say? Basic thing you will say, unbounded preceding. Obviously unbounded preceding में क्या क्या आ जाएगा? A, B and C will get included. Unbounded preceding. Then you will say unbounded preceding and one preceding. ठीक है? It is like that. ठीक. It is like A, B and C and till C. ठीक है? Rows between
unbounded preceding and one preceding. ठीक है. So what SQL will do? What SQL will do? It will go like unbounded preceding. ठीक है. 2, 3, 4. I mean to say A, B, C. It will go. Then it will come to you. Like it will say, अच्छा current row is not there. They have told one preceding. Then it will go back to 4 and stop the sum. ठीक है. So sum of 2, 3 and 4. It will be like that. Don't get confused in this way कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज लाइक दैट कि वेयर इज इट कि it should be like a plus b plus c plus c. It is not like c plus c. It is like a plus b plus c. It is like that. ठीक है. मतलब a b c is there, then you are there. ठीक है. It is like unbounded preceding and one preceding. So it is like a plus b plus c. I know most of you might get confused because I was actually like I got confused when I was learning this thing, this preceding and following. That time I thought कि अच्छा unbounded preceding and one preceding मतलब this is unbounded preceding from current row and this is one preceding. Is it like that? No, it is wrong. It is like a plus b plus c. ठीक है. It is like that. Only these three things. And if I show you in this output, suppose 101, 101, 101, 102 and 103. If it goes like this, ठीक है, it is like unbounded preceding. What's above this? Nothing, na? Zero. Zero is there above this. And what is one preceding? Obviously zero. So zero will be there. But it won't come anything. It will show you null. Zero won't show in the output. ठीक है. For 200, it is like unbounded preceding and one preceding. Unbounded preceding is 0 and one preceding from 200 from current is what? 100. For 400, I mean for the third one, it is like unbounded preceding 0 plus 100 plus 200 and one preceding is this. Simple. It will stop here. Take. This is how things work. Correct. Right. This is how things work. That's how things work for preceding and following. Most of the question are asked in this interview point of view. Depend, like if you are a fresher and going for a good startup companies, or if you are having a experience and moving to any MNCs, these questions are must. These questions are must. I don't know about today's scenario, but in this a lot of tricky questions can be asked. Lots of tricky questions. But you can get confused like anything. ठीक है ना. So that is all about. And good question भाई SRG. Really good question. Really good thinking as well. Good thinking. Good. Appreciate your thinking भाई. Yeah, hi Vishal, welcome to live stream. Hi, wait a minute. Hi Vishal, welcome to live stream. Present sir, what are you explaining? Yeah, just doubts for the preceding and following parts in Windows function related to Windows function. Preceding और following parts जो है Windows function में वही चीज़ है बस. Right. That's the thing. That's it. Okay, thanks. Got it. Yeah, welcome, bhai. Welcome.
So anybody have any more doubts? It's 9 o'clock, no worries for that. We have, but ये खराब ना हो जाए बस लाइव स्ट्रीम, यही सर. So anybody have any doubts in the live stream? Just ask your doubts here. Ask your doubts here. ओके, आपने पता किया भाई? अभी कोई हॉलीडे से आया ही नहीं है, पहली बात ये है. ठीक है, जब ये लोग आएंगे हॉलीडे से जनवरी एंड में मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड में पूरा एम्प्लॉयज आएंगे वापस, मतलब क्लाइंट के फ्रीलांस वाले सब. तब मैं पूछूंगा, ठीक है, कि अगर कुछ आइडिया है रिलेटेड टू द लोकेशन यू टोल्ड. ठीक है ना, जनवरी एंड तक आएंगे, आई विल आस्क देम. राइट, फिलहाल के लिए मेरा कोई तो फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू. बट जनवरी एंड में जब आएंगे सब, आई मीन पूरे फ्रीलांस वाले जितने जो भी काम कर रहे हैं फ्रीलांस के, सब आ जाएंगे वापस. देन आई कैन आस्क देम कि यार कोई है और एनी वन रिलेटेड टू देम. दैट्स द थिंग. ठीक है, दैट्स द थिंग. ओके, प्लीज़ ये भी पूछना, इंग्लिश यूज़ होता है कंपनीज में? या श्योर भाई, श्योर. मतलब लैंग्वेज कंस्ट्रेन ये सब चीज़ मैं पूछ दूंगा. लैंग्वेज थिंग, ओके, आई विल आस्क. ठीक है, मैं पूछ लूँगा क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, ऑल दोज थिंग्स पूछ के आपको बता दूंगा. बट वंस दे कम बैक, देन आई विल आस्क देम. ठीक है. राइट. तो किसी और को कुछ भी डाउट्स पूछना वूछना हो तो पूछ सकते हो. राइट, किसी को कुछ डाउट आउट पूछना हो, सो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स हियर, आई विल हेल्प यू आउट. सॉरी फॉर दिस. ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी हियर. कि भाई मैं सोच रहा था कि एमए मास्टर्स डिग्री, मतलब आई मीन टू से करने के बाद जाऊँ. हाँ, एक बात देखो भाई, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, लेट मी टेल यू, कि मतलब फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन करके क्या करके, लाइक लेट मी टेल यू, मतलब मैं, अगर आप पूछोगे फॉरेन गया हूँ तो थ्रू कंपनी बेसिस पे ही गया हूँ, और वो भी अमेजन के थ्रू ही. बाकी फ्लिपकार्ट और हिंडाल्को तो छोड़ दो भाई, मतलब वो तो स्टेट के बाहर भी. बट अमेजन में मैं गया हूँ, जितने भी वो सब कंपनी थ्रू गया हूँ. राइट, कंपनी बेसिस कंपनी थ्रू गया हूँ. बट इतना आइडिया तो नहीं है, मतलब क्योंकि सिंपल देखो भाई, मैं खुद पढ़ा नहीं हूँ फॉरेन कंट्री से, तो मैं इतना बोलूँगा कि भाई आ, अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ, आई डोंट नो अभी वो सिनेरियो चल रहा है कि नहीं, बट वो यूएस का है. ठीक है, मतलब नॉट यूरोपियन कंट्री, वो यूएस का है, बता रहा हूँ. मेरा एक फ्रेंड, जब मैं हिंडाल्को में था, ही गॉट सिलेक्टेड इन एक्सेंचर, ठीक है, कंपनी से. तो वो एक्सेंचर में उसका, हाँ, एक चीज़ अच्छा था कि उसका जो टीएल था वो यूएस में था. ठीक है, तो वो अपने साथ ही बीटेक किया, मेरा दोस्त है, वो बीटेक करके उसका टीएल बहुत अच्छा था, लेकिन इंडियन था और अच्छा भी था. एक्सेंचर में काम कर रहा था यूएस में. तो वो उसका वहाँ पे ही मास्टर्स करने के लिए, एमएस इन कंप्यूटर साइंस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया. तो वो फिर यूएस गया, और आज ही इज़ इन, आई थिंक गूगल था लास्ट कंपनी, अब पता नहीं अब कहाँ पे है.
गूगल में फिर ज्वाइन किया, वो इतना मुझे पता है। बट द थिंग इज कि वो वहां जाके मास्टर्स किया यूएस में। और ये कब का बात है, 2017 पास आउट हुए, 2018 काम किया, 2019 भी काम किया उसने, शायद 2020 उसने चले गया, मतलब कंपनी से रिजिग्नेशन दिया, देन ही वेंट, राइट, यूएस में गया, एमएस किया, और वहां जाके फिर एमएस करने के बाद ही गॉट अ जॉब प्लेसमेंट। और ये बहुत पहले का बात है, 2020, मतलब उस टाइम कोरोना वगैरह, कोविड वगैरह ये सब कुछ था नहीं उस टाइम, राइट। या आई थिंक 2019 में ही चले गया था, 2019 एंड में, लाइक दिस, जितना मुझे उतना याद तो नहीं है बाय द वे। सो द थिंग इज दैट, तो वहां पे जाके वो एमएस किया। तो बात यह है कि अगर आप, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, लेट मी टेल यू, कि पढ़ाई करके जाना सही है कि जाके करना है, वो एक बार आप पूछ लो। मैं तो बोल रहा हूँ जो, मतलब इस चीज में जो एक्चुअली गया हुआ है और एक्चुअली ये सिनेरियो फेस किया है, उसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ किया नहीं हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, जो मेरे रिलेटिव, मतलब जो जान पहचान के हैं, जो उन्होंने किया वो मैं बता दिया। बाकी यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, राइट। क्योंकि मैं एमएल का कोर्स 4 महीने में नहीं हो पाएगा, पूरे महीने से टाइम लगेगा। एमएस डीएस या एमएल का रोल फिर पर ही करना चाहता हूँ। ओके, तो आप, हाँ वही आप, आई नो आप एमएल का, ये क्या हो गया भाई, ये कैसे होता है, ओके। ओके, समझ गया, बढ़िया। हाँ, अरे, हाँ तो ये क्या है, एमएल का रोल, आई नो आप एमएल डोमेन में यू वांट टू गो, आई नो दैट। तो देखो, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, पढ़ के जाओगे तो भी यू आर गुड टू गो। वहां जाके पढ़ोगे तो एक बार पूछ लो, मैं तो बोल रहा हूँ, जो वहां पे जाके, क्योंकि मेरे जो दोस्त गए हैं वो तो जाके पढ़े ही हैं, दैट्स द थिंग, दे वेंट देयर एंड दे स्टडीड, राइट, है कि नहीं। और कंपनी से अगर गया हुआ है तो दो चार लोग गए हैं थ्रू कंपनी, काम किए, वापस आ गए, सो वो अलग चीज़ है। पर जाके पढ़ना फिर काम करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक। व्हाट इज टीएल, अच्छा, टीम लीड, टीम लीड, टीम लीड होते हैं। शिवा टीएल, हाँ टीम लीड, ओके। मैं जाकर नहीं कर सकता, देख लो, मतलब एक बार पूछ लो क्या सिनेरियो है, क्या है, उसके बाद यू आर गुड टू गो, ठीक है। गुड टू गो मतलब कोई अच्छा गाइडेंस देगा, देन यू आर गुड टू गो एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप, मेरा बोलने का ये मतलब है, ठीक है, राइट, दैट्स द थिंग। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, कौन सा, 7, इज एक्टिव और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ज्यादातर वी विल यूज केस वेन का चीज, ठीक है, केस वेन। लेट्स सी व्हाट वी हैव, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रॉ कस्टमर्स, देखते हैं क्या क्या चीज है। इज एक्टिव, okay, let's take this thing, is active raw, ठीक है, is active raw, let's take that, and then let's take case when is active raw in, मैं चाहता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ हो, और सारे तो कैरेक्टर वेराइंग है, तो नो वरीज फॉर दैट, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिखेंगे हम लोग, यस, देन वाई, देन वन, वन, एक चीज़ याद रखना, ये कैरेक्टर वेराइंग है इसीलिए बोल रहा हूँ, दैट्स द थिंग, कैरेक्टर वेराइंग है इसीलिए, सॉरी, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, ये ध्यान देना। वन लिखने से एरर आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर नहीं है, इट्स एन कैरेक्टर वेरिएंट, ठीक है। और क्या क्या है, कैपिटल, यस, और क्या क्या है, ट्रू, ठीक, और ट्रू स्मॉल लेटर में, इन एक्टिव केस इन दिस
मैं बोलूँगा एक्टिव देन एक्टिव केस व्हेन, इसमें ये क्यों लगा रहा हूँ, केस व्हेन doing this then active else null and सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, एल्स नल। एक बार चेक करके देखते हैं रन होता है कि नहीं। अच्छा रन हो रहा है, ठीक है, इट इज रनिंग, इट इज एक्चुअली वर्किंग। लाइक एक्टिव वाला तो हो गया, अदरवाइज अदर इज नॉट वर्किंग, सो आई वुड से एल्स नॉट एक्टिव, बट हियर आई विल गेट एन एरर क्योंकि नल में भी इशू आ जाएगा, इसीलिए लेट्स सी। देखो यहाँ पे भी नॉट एक्टिव आ गया, बट दैट्स नॉट करेक्ट। हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या है, तो हमें यहाँ पे नल फॉर्मेट में देना है, ठीक है। वी हैव टू राइट नल देयर, whatever data is having no 0 n should be not active, and wherever data is not there हमें वहाँ पे not active देना है, ठीक है। We have got a query like I get my SQL projects to showcase on my resume, yeah चलेगा यार, चलेगा, no worries। MySQL, what, like let me tell you, MySQL or PG SQL, PG admin, they are all SQL database, that's it। I mean क्या बोलते हैं उसको, SQL environment सॉरी, और यू कैन से RDBMS, दैट्स इट, ठीक है। मेन थिंग इज प्रोजेक्ट, इन व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर डूइंग, it's depend on your flexibility, there is no restriction in that। whatever platform you are doing, it's your flexibility, no restriction in that। main thing is project, ठीक है, that's the main thing, that's it, right। ठीक है, ये या यू कैन गो एंड डू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर, नो वरीज। whatever project you want to do, whatever platform you want to use, you can use it, right। no restriction in that। let me just check on just okay, let me come back in just 5-10 minutes, just let me have some free time, just wait for 5 minutes, I'm coming back again।
Sorry. So I'm back again in the live stream. किसी को कुछ भी डाउट, एडिशनल डाउट वाउट पूछना हो पूछो, नहीं तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. राइट. What this? Okay. So the question is, here what we have seen some, ये क्या है भाई? अच्छा, what's this? Frame tool, lots of things are there. Hmm. Here anyways, so our question is, what we have done, we have told wherever there is yes, there is one, there is true, or there is yes, always write active, and wherever, apart from this, wherever these things are not there, right, not active. But there's a catch, there is a place where it is blank. So in blank what happens is, like, we don't know what to keep here because data is not there and we cannot predict anything. We cannot keep an assumption key what should be kept here. Like, assumption is not a good practice in any field. Like, if you go to corporate field as well, or you work for client, or you do anything, assumption is actually not allowed, let me tell you, because that's a really bad practice anywhere you are working, right? So always make sure no assumption should be there, and let's give null for that. So for this we have to write this thing, when this then this, then we have to write this. Let's copy, let's paste it. Is active in, what are the things here? No, zero, false. ठीक है, ठीक है, and not active. Let's see. ठीक है, right now already we have seen कि already we have received a null value here. ठीक है, already we have received a null value here. ठीक है, without writing this. So that's the thing in this column where you have lots of unexpected data in the this raw wala column, and you have given a useful data or understanding of this raw data to an proper data, I would say. Okay, that's the thing. Now let's move to the actual data and see what do we have next. Acha, we have this. We have this. Let's see. We have to do proper cleaning of city column. Chalo, ठीक है. Let's see how to do it. Let's take care of the thought process of working on this thing. Okay. So what we have to do? This is what actually we have to do. So it's like we have all the text here. Okay, consist of text. And what I have told you in starting of the video, and also when you are handling this kind of data, always make sure you just do trim of this text, normal trim, so that the starting and the ending of text, starting or the ending of text are cleared out.
ठीक है, are cleared out. ठीक, that is what I'm trying to say, because this is kind of partial cleaning, and after partial cleaning you will actually know where there is gap in the between and all those stuffs. ठीक है, right? Let's jump into the query set. So in this, when you write this thing like select, select, what is the column name, city raw, select city raw, then I will write from raw customers. ठीक है, let's see what output do we get here. Proper output, see, ये क्या हो गया, हाँ, प्रॉपर, अच्छा, प्रॉपर आउटपुट वी हैव रिसीव्ड. ठीक है, प्रॉपर आउटपुट मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग का जो स्पेस है दैट इज रिमूव्ड, सिंपल एज दैट. ठीक है, बट one issue we have here. What kind of issue? Like if you have checked out that issue, you might have known it on a proper, oh my god, uh, let me just correct it. ठीक है, let me, oh, ठीक, one issue is like, one issue is like, what issue you have is this. See the starting of the letter or the text, it is not properly done. See this text, it is like everything is in uppercase, everything is in uppercase. We want everything should be like this, the first letter should be uppercase and the remaining letter should be in lowercase. ठीक है, so for this we have a thing or a function, I mean to say, it is like init cap, शायद init cap है, I think so, I just forgot, like, अच्छा, init cap here. ठीक है, we have init cap. What will happen in this, it will give you the proper, I mean say, however the text or the name is written, the proper text or name, whatever it is written, it will come in that way and it will show in the output. Like first letter should be uppercase and then lowercase. Okay, okay, we have one query here. Which platform like websites I get project? Project के लिए normal website I would say evergreen website kaggle.com. उसमें you will get the data set, projects and all. ठीक है, but you know what's the issue? Each and everyone who is learning data analytics, data science or data engineering might have done all this kind of projects. So what I recommend is like, go to this website, take any project, whatever requirements they have told to ask for, like 1 2 3, like suppose they have asked for this 5 requirements. What you do, take those 5 requirements plus you add some more requirements from your own side, from your own side and make a project. ठीक है, why I am saying this, because this is a very famous website, you know, this is a really famous website. Famous website means each and every one, each and everyone might have visited this website, might have done all the kind of projects and showcase that project in their CV or resume. That is what it is all about.
So no worries for that, you can take this project, no worries for that, but add some meaningful requirements, additional meaningful requirements in that project. So what will be the benefit? Your project will stand out from the crowd. Okay, it will be a unique one, unique project. This will be the first best thing it will happen. Second best thing is like, I would say you will have a complete understanding of the business requirement. I mean to say, whatever project you do, whatever project you do, you will be taking care of some requirements, right? Obviously, you will be taking care of some requirements. So when you will be taking care of requirements, you will first understand the project, okay? Or in data language, you will understand the business. So once you understand the business and you create your own requirement, like two, three, four, five kind of own requirement, in that way you will be able to explain the same project to the recruiter, explain the same project to the recruiter in a better way, because you have spent a lot of time in the project. Okay, you have spent a lot of time in the project, and those who have spent a lot of time on anything, either project or either any skills, they will have a good amount of knowledge in that. Okay, good amount of knowledge in that. Okay, whatever you spend more time on, you will have a good grip or good knowledge in that thing. Either it's project, either it's mobile phone. Like we, everyone, like we are giving lot of time in this, not mobile phone, but the apps or reels kind of thing. Okay. But anyways, so whatever thing you give more time, you will have more expertise in that. Okay. So that is the reason I am saying, like, if you take any project from anywhere, not even my project you take, or you take any other YouTuber project, just a minute, any other YouTuber project, always make sure you take care of two things. First, understand the requirement, understand the requirement, do all the requirement that is given in the video, I mean the project video. Second, make your own requirement and add that up, okay, to make this thing unique. Okay, more requirement from your side. The more you understand the project, the more requirement, the more business understanding you will have. That's it. And that's how you make it unique. Okay? So you take any projects, no worry for that. But make sure you take care of this thing, because this is the main thing, right? Kaggle.com is good to go if you are asking me related to the what we say, hmm, project related website. This is the good one. Most of my YouTube viewer, like live stream viewers and subscribers, they have also uh, given this recommendation. But still, acha, one more thing, let me tell you, in this you will have a lot of bad data kind of thing. Bad data matlab raw data kind of thing. So please do cleaning part properly as per the business requirement. Okay, please do the cleaning part properly. Okay, if you don't do the cleaning part properly, you might get different output, or I would say unsatisfactory output, right? Make sure you do the cleaning part and then move on with the requirements, and that's it. That's good to go, right?
So okay, it's gonna be 10 o'clock. Let's pack up right now. And acha, one more thing, everyone. I thought of saying this. I know you all, everyone might have seen this kind of recommended videos, 365 days ka videos in my YouTube channel. So it is just, let me tell you one thing, because we have only one day left, that is only 31st December is left. So every day it is like a SQL course that I thought of bringing out in front of you. It is just a SQL course which will start from 1st January. And what things are there? All the basics matlab from starting of SQL, even though where, select, everything is included in this. And that too, it is in both language, in English and Hindi. ठीक है? So every day we will be seeing at 10 a.m. we'll be seeing a new video on SQL topic, and it is like, I would say, क्या बोलते हैं इसको, it is in a proper sequence way. Sorry for the spelling mistake. It is in proper sequence way. ठीक है? It is in proper sequence way. So every day 10 a.m. you will get the video in English, and second day the same topic in Hindi. ठीक है? So 10 a.m. is the timing. So please do watch that videos. I mean to say, if you are like brushing up your SQL knowledge, or if you are learning SQL on a daily basis just for brushing up your knowledge, that's it. It is not project or something, just for brushing up the knowledge. It is like, you can go and watch the videos here. And best part is, you can ask me doubts, because like, you all are my regular YouTube viewers and subscribers. I mean to say, you ask question, everyone ask question on a regular basis. So best part is, you see the videos. If you want to understand anything additional, our live stream is there. ठीक है? हाँ, but if any bad luck happens and due to the connection issue, our live stream gets, what we say, down due to this some connection issue, then sorry for that. But anyways, videos will be present every day till 31st December 2026. I mean, from 1st Jan 2026 to 31st December 2026. And every day, each and every new topic will be presented in front of you, and it is in sequence wise. ठीक है? It is not any random kind of thing. Sequence wise project. So, I mean, sorry, not project, SQL topic. So, it is like basic, intermediate, and advanced level topics will be there, but in a sequence wise. Let me tell you again and again. It is not a random wise, like key random. We will learn select today, tomorrow we will learn Windows function, third we will learn group by. It's not like that. It's on a proper sequence way. Every day you will get project. I mean, oh my god. Every day you will get videos on SQL topics from 1st Jan. So one day English, like it is like that. 1st January English, 2nd January in Hindi. ठीक है? Same topic, same topic. Then on 3rd, the second topic will be in English. Then on 4th, it will be in Hindi. It was like that. ठीक है ना? So each and every topic, let me make sure you understand it. Each and every topic will have the same knowledge in two languages. So that's the thing. The thing is clear out here.
So whatever doubt you will be having in any of the sequel videos, please ask here in this live stream. I will be very much happy to help you out. It is not like ki I have taught in the video, I won't tell that thing again. No, it is not like that. The main thing is, until and unless you are not clear about the topic, please ask your doubts. Please. It is like there is no limitation of asking doubts. You can ask same doubts this many times. Yeah, limitation is there, I mean to say. This many. So that's the thing. Like you can ask your doubts as much as time you want. It is not like yeah, I've made videos, so I won't tell you again. I will give you the link. Not like that. I will make sure you are understanding the topic in easy way, or I would say easy example. ठीक है कि नहीं? So please do watch the videos, and that's it. That's all about it. Okay, we have one query. Can you make Telugu videos on SQL? Arey, sorry, bhai. I'm good in two languages only. I'm really sorry for that. Hindi and English. I mean English and Hindi. Even though I know Odia and Bengali, but I'm really sorry about it. I'm really sorry for that. Hindi and English I know properly, and I can make a video on this. Malab not properly, but yeah, I can make video on this. Even though I know Odia and Bengali, but still, that's the thing. But anyway, Shiva, no worries for that. You can ask me doubts anytime, any doubts you want to ask me, like how many times you want to ask, you can ask. No worries for that. I will make sure you understand the topic. That's it. That's my aim for 2026 and 2025 as well. That's my aim. Like if you're coming to my YouTube live stream, uh, you should make sure you are understanding the topic, whatever I'm telling to you. If not, still ask again. I will explain that topic again and again without any issue, right? And also one more thing, don't, please, anybody in the live stream, don't think like ki doubt is basic, like doubts are very basic, or I have asked that doubt 2 days ago, I should not ask it again. It is not like that. If you ask that same doubt at 6 p.m. today, and you ask the same doubt again at 10 p.m., I will make sure you understand that doubt. Okay? I will make sure I will teach you about that topic again and again. There is no restriction in that. And no doubt is basic. Let me tell you, no doubt is basic. Don't think about it. It's not a school. Like in school, teachers would be like, yeah, basic doubt क्यों पूछ रहा है? They won't tell that thing. ठीक है? How many times you want to ask, you can ask, and there is no basic doubts or what we say dull kind of doubts. Take doubt is a doubt. That's it. Doubt is a doubt. That's it. Take. Hey, hi Keshav, welcome to live stream. Long time. Sorry. Keshav, welcome to live stream. Hi Keshav, welcome to live stream. कैसे हो? And also like anybody from your friend circle or someone who is learning or want to learn SQL, please recommend them these videos. ठीक है? So these videos are free. I'm free मतलब not for members, for everyone. ठीक है? So if your friends are learning SQL or are brushing up their knowledge in SQL on a daily basis, please share these videos to them. ठीक है? It will be really helpful. And still, if they have any doubt in that, please tell them to join my live stream and ask me doubts. Okay? I will help them out, right? I will help them out as well. Okay? So only one day left. 1 day, 2 hours. I mean, for 2025.
Yeah, I am good. What about? Yeah, I am good, bhai. Everything is going good. Everything is going good. I'm okay. I'm fine. How are you? I'm good. Everything is done and dusted. So let's see what we have in this new year. What new things we have in this new year. Let's see that. And ठीक है यार चलो it's good. So किसी को कुछ भी डाउट हो पूछो. Okay, we have one query. If you have time, can you tell the difference between CT, subquery, and derived table? Good question. Good question, Shiva. And also, let me tell you one thing because you asked this doubt. I will explain it. No worries, I will explain it. Let me show you something. किधर गया? This, just a minute. See, we have, oh, sorry, I mean to say, derived. Hmm. If you check this out, I am sharing you the video link as well. I have like this kind of video made in this course. ठीक है. Also I made this kind of videos in this course. ठीक है ना. So just I am telling you कि I made this video. It's not like कि you go and check that out only. Let me explain you what is CT, what is subquery and और क्या था, what is CT, what is subquery and what is derived table. ठीक है, simple. Okay, we have two, three more queries. Keshav. Actually, I was trying to build new project for DA. Have already built a project on e-com. Suggest me another domain. Okay, Shiva, just coming back to you. Related to another domain, you can take care of the healthcare ka data set. The thing is, I have made a Power BI project for December and also on January. A Power BI project is coming again. ठीक है. Power BI for healthcare in January it is given and healthcare plus finance. ठीक है. Healthcare plus finance का project will come on January. Why I am saying this? Because this projects have their data set. ठीक है. This project have a Google Drive link, and in this Google Drive link you will get a data set. ठीक. You go you go check out that project. I mean for January 1 you can directly go to the video का description box, Google Drive link है. In that you go and download the क्या बोलते हैं data set for the project. ठीक है. You download the data set from there. For December you already have the full project and all. I mean to say for healthcare domain you can go and do a new project for the data analytics point of view. ठीक है. In data analytics point of view, if you want to do something different related to healthcare and healthcare
प्लस फिनेंस, ठीक है, हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर प्लस फिनेंस, ठीक. If you want to do something different, I mean to say, you have the data set, you take my requirements, whatever requirements I have taught to you in this project, December and January, both January, 1st January you will get the project and all, ठीक है. तो you go download the data set, take the requirements, and that's it, you're good to go for that. Hey, hi, welcome to live stream. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. भैया सीक्वल में प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर पोर्टफोलियो, देखो भाई बेसिक्स प्रोजेक्ट है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, मतलब सबके मतलब सारे टूल्स के लिए है, सीक्वल के लिए है, यहाँ पाइथन के लिए भी है. पाइथन विजुअलाइजेशन का अलग से प्रोजेक्ट है, राइट. देन एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट है, पावर बीआई का प्रोजेक्ट है, और जनवरी में और एक प्रोजेक्ट आ रहा है पावर बीआई में फॉर फिनेंस एंड हेल्थ केयर. यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, फॉर बट वो जनवरी 1 में आएगा, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू शिवा का डाउट, ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी इज सिंपल, इट्स लाइक अ क्वेरी written inside another query, ठीक है. It is what? It is just a query written inside another query. Sub query, it is a query written inside another query, right? But there is what one twist in subquery, like subquery is used in three ways: in where clause, ठीक है, in select clause, or you can say select query, clause नहीं होता है शायद, sorry for that, and in from clause, ठीक है. Subquery can be used in three ways. Can be मतलब it is used in three ways, not can be, it is used in three ways: in where clause, select clause, and from clause. And the subquery which is used in from clause is called the derived, क्या बोले थे आपने, just a minute, the derived table, ठीक है, derived table, ठीक. So we will understand two thing right now, we will understand subquery and derived table, ठीक. Okay, we have one more query. Okay भैया, thank you, yeah, welcome, thank you for joining our live stream. हाँ, तो where we are now, we will understand two things. First, what is subquery? Subquery, it is like a query which is written inside another query. Example, select everything from table name, whatever table name you are having, then you will write where some data, or the, or you would say where kind of let's write a data, whatever data you want to find out, what data is greater than the max salary, ठीक है, the max data or the max salary or the max sales. So it is like select max of data, and also make sure this two things should be same, ठीक है, this thing and this thing should be same, make sure you do that from the table name, ठीक है. So this is a subquery. Subquery is like writing a query, writing a query inside another query, and the query that we tell as a subquery is called inner query, ठीक है. And the query which is, I mean the second query is called outer query, right? Now let's do some deep dive into it. Whenever you use subquery, always the inner query executes first, execute on first place, ठीक है. Inner query execute on first place, then
what happened, the data or the output from the inner query is taken and that output is used in the outer query, inner query or subquery. Okay, it is like that. Always remember one thing, one trick question like recruiter can ask you, like what is the order of execution when you are using a subquery. Directly say first the inner query execute, first the inner query executes, which is also called as subquery, and the data or the results from the inner query or the subquery is used in the outer query to find the output. Okay, so this is what subquery means. Okay, this is what subquery means. And what other things I have told, subquery can be used in three ways, like select. You can use subquery in this as well, like select everything and you can write select kind of max of data from the table. Okay, like this you can write. I mean, in select also you can use subquery. In where clause you can use subquery, like we have seen right now. Also in from clause you can use subquery. Okay, and when you use subquery in from clause, that is actually called derived table. Okay, so the subquery that is used in from clause is called derived table. From here we will understand what is derived table. So what is the name suggesting? Okay, derived table normal meaning is what? Temporary table in technical point of view, or the layman's language meaning derived table matlab the table which is derived from the user, which is derived from the user. Okay, any of the thing you can say. Derived table is what? The table which is derived from the user, which we are making. Okay, which we are making. And also you can say a temporary table. So that's the thing, simple as that. That's the thing. And how to use it? I will take the average part only, like select everything from from I will write a subquery. I will write select suppose a column name, then I will write average of a column name, a different column name from the table group by column name. So this is the thing we are making a derived table. Okay, this is a derived table we are making. Okay, from this, where I would say where I will take this aggregate function which is inside the column is greater than something, some number. Okay, this is the thing. Always make sure when you are learning SQL, let's go to the basics. When you are learning SQL, in select clause, whatever you are write, whatever you write, whatever things you write, it comes in column. Okay, I mean the output shows only those column, right? Column, column 2. Then you write from in from what you write, in from you write the table name. Okay, you basic SQL query. Okay, basic SQL query you write select this from this. Okay, so from always you write a table name, so it is easier to understand. Whenever someone say ki derived table is used in which clause, suppose a tricky question or a question from the interviewer, a derived table is used in which clause, like the subquery is used in which clause, like is it used in select
or from or where. Directly say, as the name suggests, table, and always in SQL query table name is written in from. ठीक है, in from clause always the table name is written. So the derived table or the table you are creating from your own side will be used in from platform. ठीक, that's the thing, simple as that. Now comes the last part, that is city. ठीक है, city name suggest common table expression. Sorry for the spelling mistake, I don't know the spelling is correct or not. Common table expression, and it is nothing but whatever query you write from table name. Whatever query you write, you are just giving a temporary name to that. That's it. You will write with T1s. So this thing you are writing, you are just writing a temporary table name. But to execute this temporary table name, always make sure the query that is inside the table name is there, because you have to select everything and then execute it. ठीक है, then execute it. That is city. You are just giving a temporary table name, and then you are using the same data from the temporary table name in different places, like in different requirements, or it is better to say in future requirements. ठीक है, that's all about it. ठीक है, that's it, nothing else. Yeah, hi Faizan, welcome to live stream. Okay, भैया, okay. Yeah, hi Faizan, welcome to live stream. सो इट्स लाइक सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का एक प्रोजेक्ट वीडियो भी अपलोड कीजिए. करते हैं भाई, करते हैं 2026 में. लेट्स डू समथिंग रिलेटेड टू दिस. ठीक है, वी विल डू इट. ठीक है, वी विल डू इट. अभी जनवरी के लिए तो प्रोजेक्ट बन गया है. फेब्रुवरी के लिए ऑलमोस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीन मेड. 80% बचा है, वो भी कर देंगे. तो मार्च में लेट्स कीप दिस थिंग. ठीक है, क्या बोलते हो? लेट्स कीप दिस थिंग एज पर टाइमिंग. मार्च में रखते हैं सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स का. लेट्स कीप दिस थिंग एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. Hey, hi Keshav. Hi Shubham. I have sent a mail. Whenever you are having time, please have a look. Let's see. Hmm. Okay, I have received your mail. I have sending you the this acknowledgement mail as well. I have sent you not acknowledgement mail for this, but give me some time, because the thing is कि tomorrow I might or might not come in live stream. ठीक है, might not, because tomorrow we are having a family function here. That's why. But just give me some time, by Saturday or by Sunday. ठीक है, is it okay? What do you say, Keshav? Like by Saturday or Sunday, if you give me time, I will send you mail. ठीक है, because tomorrow is 31st and I might not come in live stream. Might not. Chances are there, like 40% chances there I might not come. ठीक है, but still Saturday Sunday I will give you the I mean the result for the mail. I won't say because of privacy issue what it is, but I will give you. ठीक है, whatever issues you have. And I have sent you the acknowledgement mail as well, that I have received your mail. ठीक है, no worries for it, no worries for that. ठीक. तो anybody have any more doubt? अच्छा, it's 10:20. Let's, okay, we have one more query. That's great. चलो सही है फिर. So let's
close the live stream right now. It's 10:30 and let's join again tomorrow. Tomorrow matlab maybe in morning I might be doing live stream, work wala live stream, because I have to work tomorrow as well. ठीक है, that's the thing. Okay, we have one query. Sir, DA skill set से freelancing कैसे start करें? What are the option? कितना टाइम लगेगा पहला प्रोजेक्ट मिलने तक? भाई पहला प्रोजेक्ट जब मेरे को मिला था फॉर एक्सेल, मैं 100+ रिजेक्शन फेस कर चुका था फ्रीलांस के लिए. सो वॉट एवर स्किल्स यू हैव इन डेटा एनालिटिक्स, with help of that skills start searching for freelance client. ठीक है, मतलब जो भी स्किल्स है, ठीक, जो भी स्किल्स आपको प्रॉपरली आता है, या तो सीक्वल या तो एक्सेल, वॉट एवर स्किल्स यू हैव, अ गुड ग्रिप ऑन दैट, आई मीन टू से गुड ग्रिप ऑन दैट टूल, या तो गुड ग्रिप ऑन द स्किल, उसी स्किल को लेके आप फ्रीलांस क्लाइंट सर्च करना स्टार्ट करो. ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा. मेरे को तो 100+ रिजेक्शंस मिले थे, उसके बाद जाके पहला एक्सेल वाला मिला था, वो भी 2 days का, जो पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट था मेरा. प्रोजेक्ट मतलब वर्क बोलो, नॉट प्रोजेक्ट. 2 days का क्या ही प्रोजेक्ट रहेगा, तो वर्क था वो 2 days के लिए, बट मिला था. इट टुक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट मिला था भाई, राइट. सो दैट्स द थिंग. मैं तो बोल रहा हूँ जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल सेट है, उसी से रिलेटेड स्टार्ट सर्चिंग फॉर फ्रीलांस क्लाइंट. और एक चीज बता दे रहा हूँ, फ्रीलांस क्लाइंट खोजना इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी. ठीक है, इफ यू आस्क मी, इफ आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू क्लाइंट फ्रॉम नाउ, मतलब आप सोचो, या 1 जनवरी से भी अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो इट माइट टेक 3-4 months for me as well to search a client. Let me tell you, even though after having experience, matlab I am not flexing, but still I am saying, even though after having experience and client experience, matlab corporate experience plus client experience, it might take 3-4 months. Also might be chances कि more than 3-4 months भी लगे मेरे को न्यू क्लाइंट खोजने के लिए, अगर मैं खोजना स्टार्ट करूँ फ्रॉम 1 जनवरी. सो दैट्स द थिंग. कंसिस्टेंसी पे रख, अपना माइंडसेट रखो, यू विल गेट. ठीक, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलेगा, बट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो अपने साइड से, राइट. सो दैट्स द थिंग, दैट्स ऑल अबाउट इट. सो लेट्स मीट अगेन in a new video, I mean new live stream. Tomorrow I might do live stream just for the work wala, because I have to work anyhow, I have to work. तो वर्क वाला लाइव स्ट्रीम में यू कैन ज्वाइन एंड आस्क मी डाउट्स, बट एनी हाउ ड्यू टू सम इशू आई हैव टू, इशू मतलब क्लाइंट विल बी देयर, ड्यू टू विच आई हैव टू जस्ट टाइप एंड गिव यू द आंसर फॉर वॉट एवर क्वेश्चंस यू विल बी आस्किंग. ठीक है. So the second part of the live stream where we will be doing a chit chat might not be done tomorrow, but still I will try. But still I will try. ठीक है. So okay, thank you everyone for joining my live stream. Good questions were and good doubts were asked today, because Windows function preceding, following, उस type के doubts, it was really good. मतलब it was really good. ठीक है. And thank you everyone for joining my live stream and asking me doubts. So let's meet tomorrow again in a new live stream. Till then, bye bye, take care, happy coding, happy learning, and happy querying, and good night.